Okay, so as the name suggests, the Ayurveda 2.20 New Horizons with Artificial Intelligence and Integrative Medicine, और जो इस प्रोग्राम को हमारे साथ को होस्ट और को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके नाम में वेलनेस है, और इस टोटल प्रोग्राम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो आयुर्वेद की दो मूल मंत्र आज की इस वर्कशॉप में है। हाँ, वी टारगेट वेलनेस एंड इट इज़ परहैप्स द only healthcare system which uses intelligence the most as practice of health preservation, promotion and therapeutics। हम बिना बुद्धि के कोई भी काम को नहीं करते हैं। तो दी होल वर्ल्ड हैज़ टेकन ए फुल सर्कल। जो बुद्धि को हम मशीन से रिप्लेस करने की कोशिश करते थे, अब ये इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस अब दुनिया को समझ में आ रहा है। सो आज का ये प्रोग्राम आप सभी लोगों के लिए एक आई ओपनिंग प्रोग्राम, एंड मे बी आई बिलीव हम लोग एक रिविजिट करेंगे जो एक्चुअली हमारे शास्त्र में था और हम उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन में छोड़ दिए। तो ये टारगेट आज का रहेगा। और एक लास्ट जो लाइन है, एवरीथिंग दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल एक्चुअली ट्रेस्ड बैक टू नेचुरल। आप अगर सिंथेटिक केमिस्ट्री देखेंगे, कहीं ना कहीं नेचुरल केमिस्ट्री से वो प्रारंभ होके सिंथेटिक केमिस्ट्री में पहुंचा है। तो ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन ब्रेन से जो नेचुरल इंटेलिजेंस है वहाँ से शुरू होता है। ये आप लोगों को अगले 3 घंटे में हम लोग जो एक्सपर्ट्स हैं उनके माध्यम से पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपनी वाणी को विराम देके कर्ण को एक्टिवेट करेंगे तो ये आपके काम में आएगा। सो नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर रश्मि जैन, जो आगे की प्रोग्राम को मास्टर ऑफ सेरेमनी रहेंगी। मैडम जो है एक रिटायर्ड प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन है, और वो अल्टरनेटिव मेडिसिन की भी एक्सपर्ट है। और उन्होंने जो बेसिकली आयुर्वेद की डिग्री होना नहीं होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कौन कितना आयुर्वेद को प्रैक्टिस करता है और कौन कितना आयुर्वेद को जीता है, उसी से हम चलते हैं। सो मैम इज एक्चुअली an epitome of practicing and living the life with Ayurveda. So now I request Dr. Rashmi Jain ma'am to take over the stage and start the proceedings of the day. Thank you very much. Thank you Professor सुदीप, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए और मेरा काम आसान करने के लिए। तो मैं डॉक्टर रश्मि जैन, को चेयर माय क्रैक द वेलनेस कोड के फाउंडेशन की तरफ से व NIA की दोनों के संयुक्त तत्वाधान में जो हम ये आज ये कार्यक्रम आपके सामने लेके आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद कि आप यहाँ पे इतने नंबर में मौजूद हुए। न सिर्फ आपने यहाँ पधार के हमारा मान बढ़ाया है, बल्कि हमें एक तरह से अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित भी किया है और हमारा हौसला बढ़ाया है। स्वागतम, शुभ स्वागतम, वंदन, अभिनंदन बारंबार कि हम लाए हैं एक अत्यंत ही रोचक थॉट प्रोवोकिंग सेशन आपके द्वार। जी हाँ, जैसा कि नाम में दिखा है 2.0 न्यू होराइजन ऑफ AI एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन। तो ये आयुर्वेद का नया एडिशन है, एक एडिशन जो कि आज की जो हमारा समाज है, हमारा जो युग है, इस युग में एक युगांतकारी परिवर्तन लाने के लिए कहना चाहिए कटिबद्ध है। तो स्वास्थ्य सेवा, इसका जो उद्देश्य है मुख्य रूप से ये कि हम अपनी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको कैसे सशक्त और बेहतर बना सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटलाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन, ये कुछ और नहीं, वही जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, या जिसे हम ब्रह्म इंटेलिजेंस या ज्ञान बोलते हैं, उसी का नवीनतम रूप है। ये तो आप लोगों ने सबने पढ़ाई है, मैं उसके बारे में क्या कहूँ। तो इंटेलिजेंस ये जो कि हमको ये सिखाए, हमारे काम को और बेहतर बनाए, हमें एक बेहतर इंसान से एक अपने कार्य में और ज़्यादा उन्नति लेकर के आ पाएँ, हम अपनी
प्रैक्टिस को अच्छा बेहतर बना पाएँ, इन सब के लिए हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हेल्प कर सकता है और हम इसमें कहाँ पे खड़े हैं, आगे क्या क्या चैलेंजेस हैं, इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करने जाएंगे। सबसे पहले हम आदिदेव धन्वंतरी का आह्वान करना चाहते हैं और उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ NIA से पधारे प्रोफेसर कृतिका और उनके साथी मनस्वी जी का, कि वे आए और धन्वंतरी देव का आवाहन करें। शंखं चक्रं जलोकां दददमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुट्यां सुखपरिविलसन् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनः प्रौढदावाग्निनीलं 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 प्रौढदावाग्निनीलम्। धन्यवाद कृतिका जी, बहुत ही सुंदर, एक कहना चाहिए अभिभूत करते देने वाला, एक अलग ही दुनिया में ले जाने वाला आवाहन। जरूर से आज धन्वंतरी देव की हम सब पे कृपा होने वाली है। So now proceeding further, quality is not an act, it's an habit. So it's all about quality culture which leads to overall excellence in any field. और ये बात जिसके ऊपर सही उतरती है, जिनका जीवन का उद्देश्य ही सरलता और सादगी के साथ उच्च विचार है, वो और कोई नहीं, NIA के ऑनरेबल वाइस चांसलर एंड डायरेक्टर श्री प्रोफेसर संजीव शर्मा जी। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और अपने संभाषण से हमें अनुग्रहित करें। दीप नहीं, दीप का प्रकाश मुझे चाहिए, आपके आशीर्वचनों की सौगात मुझे चाहिए। प्रोफेसर शर्मा। सभी को मेरा सादर नमस्कार और रश्मि जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में जो कि दो संस्थाओं के द्वारा एक संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे हम इंटीग्रेटिव मेडिसिन में या आयुर्वेद में प्रयोग करें, इसके ऊपर ये आज वार्तालाप होने वाला है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से यहाँ पर पधारे प्रोफेसर SK खांडल जी, डॉक्टर विवेक शानवाग जी, डॉक्टर बाला परसाला जी, डॉक्टर देविका देशमुख जी, डॉक्टर रश्मि जी, श्री नरेन बख्शी जी, विंग कमांडर VK काला जी, बग्गा जी और उनके सहयोगी, मेरे संस्थान के सभी विभागाध्यक्ष महोदय, कुल सचिव महोदय, फैकल्टी मेंबर्स और प्रिय छात्रों, आज ये जैसा कि बताया गया एक अनूठा कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं और कार्यक्रम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है और इस बदलती हुई दुनिया के साथ अगर हम नहीं बदलेंगे, इफ वी डू नॉट चेंज आवरसेल्फ, आवर थिंकिंग,
then definitely we shall remain backward. Ayurveda, which is the Indian knowledge system, is required to be popularized for the benefit of the society, for the benefit of the humanity, not only at the local level, but at the global level, at the international level. But at the international level, many changes are happening. And we have to adopt those changes very fast, accurately, precisely, for the benefit of the system as well as for the benefit of the society. Now, this new thing, that is the artificial intelligence that has come forward. And many or almost all other sciences, including the medical science or basic sciences, they are now using artificial intelligence for the furtherance of their science and for the welfare of the humanity. Similarly, our science, Ayurveda, also definitely needs to use the artificial intelligence in a very appropriate way. And for that, first of all, we have to sensitize ourselves. Because artificial intelligence, this is a big tool. With the help of this tool, we can help the society. We can boost our science, but at the same time, there are dangers and challenges also. But we should talk about the benefits. That Ayurveda can progress, can be brought at the forefront of the science by using this artificial intelligence. And for that, first of all, we have to sensitize and then we have to use this science. Because what is artificial intelligence? That we develop a system or a mechanism within the machines so that those machines can think and behave like human beings. And for that, we have to train those machines by number of ways. Because machines are to be trained by us, so the training of the machines, that should be very much accurate, that should be very much precise, on the basis of our own principles. While using any modern technology, may it be computerization, digitalization, or artificial intelligence, or any other thing, the basic principles of Ayurveda, those should not be distorted or destroyed. We should not forget this fact. By keeping our principles intact, we can train the machines, we can come forward with newer and newer methods, tools, applications for various purposes, likewise diagnostics, preventions, helpful in the treatment, helpful in the surgeries, and in so many areas in the medical science or in Ayurveda, we can use the artificial intelligence. It depends upon us that how much we indulge ourselves in this part and how much we use the artificial intelligence for our benefit. Not our personal benefit, but for the science, again for the business, and of course, for the benefit of the society. So today's this program has been planned, keeping these facts in mind, that at least we should get sensitized about the artificial intelligence, because that is the future. If we want to generate some evidences, because today's world, it believes on the evidences, not on the vocal advocacy, कि हमारी संहिताओं में ये लिखा है, हमारे टेक्स्ट में ये लिखा है, हम ये करते हैं, मैंने ये कर दिया. Claims, tall claims or blames, ये दुनिया नहीं सुनती है. We need some evidence. And for that evidence, we have to use the scientific tools, scientific methods, and various other technologies. And artificial intelligence is one of the recent, or we can say nascent technology, which we should use, and we should use it fastly.
Otherwise, just after a year or 2 years, after the lapse of 2 years' time, we shall be considered as illiterate persons if we are not knowing about the artificial intelligence, or we are not using the artificial intelligence in our business of Ayurveda. So, I hope that this short session of 2 to 3 hours will be very much useful and beneficial for all of us, because eminent experts from abroad and from our country, they are here to share their views about the artificial intelligence and how. And there are experienced scientists also here present, particularly Dr. Bala, who has mastered the technique artificial intelligence, and he is also working on Ayurveda, or integrating Ayurveda with the artificial intelligence, and I know that he has worked a lot. So, with this today's sensitization program, hopefully we shall get sensitized enough, and we shall try to use this science, artificial intelligence, for our knowledge or enrichment of the knowledge. For example, if we talk about the Prakriti, right now we are limited, our thinking is only limited up to some types of or some sets of the Prakriti. But the combination and permutation of different components of dosha, that can lead into the thousands of subsets of Prakriti, about which we are not thinking. If we precisely read that the Prakriti of a person, then we can predict so many things. We can predict the future diseases he can suffer, and we can prevent those diseases well in time. So, by using this technology, we can predict, we can prevent, and we can treat the diseases. So, I hope and I wish that this session will be very, very useful for all of us. And I particularly request my dear students that be interactive also. Whenever there will be, after session, there will be a panel discussion also. Be interactive. If there are some queries, questions, doubts in your mind, or your suggestions are there, you can come forward and ask the questions and contribute positively to this session. With this, I am again thankful to the co-organizers of this function, that they were kind enough to collaborate with NIA and to bring the experts at this platform in NIA. I extend a warm welcome to all of you who have come from abroad and from country to contribute and to share their views here, and the organizers also. Thank you very much. Thanks a lot. थैंक यू सर, आपकी उपस्थिति ही हमें हौसला दे देती है। मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि जब पहली बार संजीव सर से बात हुई थी, तो उन्होंने इतनी तत्परता से हामी भरी कि हम लोगों का विश्वास दुगना हो गया कि हाँ, ये प्रोग्राम हो सकता है और अच्छे से होगा। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे क्रैक द वेलनेस कोड के फाउंडर एंड चेयरमैन नरेन बख्शी साहब को। ये जन्म से हिंदुस्तानी और कर्म से अमेरिकन हैं। इनकी पढ़ाई और शिक्षा हिंदुस्तान में हुई, फिर बाद में इन्होंने बर्कले यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई की, और 1966 में ये चले गए थे। तो आइए सर, ये एक ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ही, हम कहते हैं, दूरदृष्टिवान हैं, जीवट हैं, और कोई भी परेशानी इन्हें परेशान नहीं कर पाती है। रोगों का घेरा कितना भी बड़ा हो जाए, इन्होंने उनसे बख्शा नहीं, और स्वास्थ्य लाभ करके ही दम लिया और आगे का रास्ता सुगम किया। इनकी उम्र आपको कितनी लगती है? हम तो कहते हैं कि ये 25 साल के हैं, 55 वर्ष के अनुभव के साथ। नरेन बख्शी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कृपया सबको अवगत कराएं अपने विजन से और क्रैक द वेलनेस कोड से। पतंजलि सूत्र से तो आप सब वाकिफ हैं, तो ये वेलनेस का कोड क्या है? ये वेलनेस का कोड भी कुछ ऐसा ही कोड है जैसे कि पतंजलि का सूत्र हुआ करता था।
तो आगे की चर्चा बख्शी साहब से। जैसा इन्होंने कहा, सुन रहे हैं आप? आवाज आ रही है? जैसा रश्मि जी ने कहा, मैं जयपुर से ही हूँ, यहीं पर बड़ा हुआ हूँ। मैं इंग्लिश में बोलने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि आपसे हिंदी में बात करूँ, अच्छा लगेगा। तो पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये दो फोटोएं दिख रही हैं आपको, राइट वाली अच्छी है या लेफ्ट वाली अच्छी है? विच वन? रेड शर्ट वाली बोल रहे हैं। रेड शर्ट वाली, है ना? अब सोचिए आप, किसी टाइम पर हम वैसे थे, तो मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम गलती ही ना करें। उससे थोड़ी सी अच्छी चीज़ होती है कि गलती हो जाए तो सुधार लें। सही बात है ना? यस और नो? तो मेरा काम आज सिर्फ ये है कि CWC जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हमने 5 साल पहले अमेरिका में चालू किया, उसके बारे में सिर्फ इतना बताऊं, क्यों चालू किया और हम आज यहाँ क्यों हैं। बहुत सिंपल बात, क्यों किया, क्या किया, कैसे किया, आप क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट चार्ट। हाँ, थैंक यू। नहीं, वही वाला, ठीक है। तो अपन कोई भी काम करते हैं तो उसमें कोई रीज़न होता है करने का। तो हमारा रीज़न तो आपको समझ में आ गया। आई वॉज ए सिक पर्सन इन ईयर 2000। सब कुछ अच्छा हो रहा था, मेरी कंपनी भी पब्लिक चली गई थी, नाम भी बहुत हो गया था, लेकिन अंदर से क्या थे हम? दुखी होंगे ना, दुखी। जब डायबिटीज़ हो, स्लीप एपनिया हो, हाइटल हर्निया हो, ऑन एंड ऑन एंड ऑन, आप खुशी नहीं रह सकते। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि हमारा जयपुर आना चालू हो गया। तो माई फादर लिव टिल 94। वो विश्वास किस में करते थे? नेचुरोपैथी, योगा, मेडिटेशन, डिसिप्लिन लिविंग, वो हमने चालू किया। और बिल्कुल 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 आपको ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि आई एम टुडे, एवरीथिंग इज गॉन। इज इट गुड और बैड? यस। अब सोचिए, तो हमने 4-5 साल पहले एक गोल बनाया कि यदि मैं कर सकता हूँ तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं। तो हमारा मिशन ये था कि अगले 5 साल में कम से कम 5 मिलियन ऐसे लोग, हमारे जैसे लोग, उनको ठीक कर दिया जाए। दैट्स आवर मिशन, सिंपल मिशन। अब उसमें क्या काम आएगा वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया। तो अच्छी बात ये हो रही है, इसके लिए आपको बहुत खुशी होगी कि बेस्ट सॉल्यूशंस इन हेल्थ केयर आर गोइंग टू कम फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट कॉम्बिनेशन। न ईस्ट के वालों के पास सब कुछ है, न वेस्ट वालों के पास सब कुछ है। आप वर्ड सुन रहे हैं, इंटीग्रेटेड मेडिसिन। दैट्स व्हाट इनडायरेक्टली डायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ जो डॉक्टर शिवजी ने बोला कि हम कहाँ से आ रहे हैं? सिलिकॉन वैली से। सिलिकॉन वैली की क्या चीज़ है आपको मालूम है? टेक्नोलॉजी है ना। आईफोन यूज़ करते हैं, एप्पल यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, सब वही है। लेकिन आपको ये दिमाग में डालना है कि अगले 5 साल में जो होने वाला है वो पिछले 20 साल में नहीं हुआ है। शर्मा साहब ने आपको कि यदि आप जल्दी से ये चीज़ें नहीं सीखोगे तो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाओगे कॉलेज से निकलने के पहले। तो हम चाहते हैं कि बेस्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट आगे आए। अब हम करते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं हम? बहुत सिंपल। पहली चीज़ तो ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि क्या राइट चीज़ है। आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो आप फॉलो क्या करोगे? दूसरी चीज़ वो बहुत ज़रूरी है कि आपको मोटिवेशन मिले
कि वाकई मैं करूं ऐसा तो ठीक हो जाऊंगा, मैं कुछ करूं तो ठीक हो जाऊंगा। तो वो मेरे जैसे लोगों को, आप एक नहीं दो नहीं, मान लो सैकड़ों लोगों को देख लिया, यार इसके डायबिटीज़ थी ठीक हो गया, इसके हाइपर हर्निया था ठीक हो गया, इसके हार्ट प्रॉब्लम था ठीक हो गया। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स पिछले 5 साल में हमने तैयार कर दी है। उसके बाद में यह है, हम आपको सपोर्ट देने की ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाट CWC इज़ ट्राइंग टू डू, टू मेक श्योर वी प्रोवाइड सपोर्ट इन योर जर्नी, सिंपल। और आखिरी बात, डेटा की बात हो रही है, यदि हम इम्पैक्ट नहीं यूज़ कर सकते कुछ नहीं होगा। अब नेक्स्ट चार्ट में आपको एक बहुत अच्छी सी चीज़ बताऊंगा। नेक्स्ट चार्ट, अपन ईस्ट की बात करते हैं, हाँ? ओके, कोई बात नहीं, वो नहीं है। तो आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो पहली चीज़ जो अमेरिका में एक्सेप्ट हुई ईस्ट की, वो थी नेचुरोपैथी। आपको मालूम है 1901, कितने साल पहले, एक कॉलेज बन गया बॉस्टन में, कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी। सबसे पहली चीज़ एक्सेप्ट हो गई। फिर क्या हुआ, जब हम 1966 में अमेरिका पहुंचे तो कोई भी किसी को भी ऑलमोस्ट योगा का नाम भी नहीं मालूम था। दैट्स व्हाट आई सॉ। द ओनली थिंग आई सॉ वाज फ्यू हरे कृष्णा पीपल, नथिंग एल्स। 20 साल बाद चालू हो गया वो। 20 साल बाद बहुत रिसर्च, टेस्टिंग, ऑल काइंड्स ऑफ, इट बिकेम क्लियर कि योगा बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप कोई भी अमेरिका के शहर में नहीं जा सकते जहाँ पे योगा नहीं है। और कौन कराता है वो? 90% ऑफ दोज टीचर्स आर अमेरिकन्स, नॉट इंडियंस। तो इसका मतलब एक्सेप्ट हो गया ना। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या एक्सेप्ट हुई, कोई बता सकता है? मेडिटेशन। Starting that time, meditation got accepted. So today, by 1990s, meditation has become mainstream. Mainstream. नाम बदल देते हैं कभी कभी, बोलते हैं माइंडफुलनेस, बोलते हैं कामनेस, लेकिन चीज़ वही है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जिसके लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है, बहुत सारी दवाएं, बहुत सारी बीमारियां सिर्फ फास्टिंग से ठीक हो जाती। इफ़ यू फास्ट, तो इंडियन सिस्टम में तो फास्ट तो होता ही है। कोई 1 दिन का करता है, कोई 3 दिन का करता है, कोई 10 दिन का करता है, कोई। तो वहाँ पे टेस्टिंग होने के बाद में ये प्रूव कर दिया उन्होंने कि बहुत सारी बीमारियाँ फास्टिंग से ठीक हो जाएंगे। 2016 में नोबेल प्राइज मिला है इस काम के लिए। तो आज इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम सुना है? यस और नो? That is accepted everywhere. Now what is work in progress, जिसके लिए कि आपके सारे लीडर्स आए हुए हैं? The work in progress is आयुर्वेदा। चालू हो गया है। डॉक्टर शानबाग जो यहाँ पे हैं, डॉक्टर जो बाला काम कर रहे हैं, वो चालू हो गया है। लेकिन थोड़ा सा काम की ज़रूरत और है, जिससे कि दुनिया भर में आयुर्वेदा की अच्छी से अच्छी चीज़ें चली जाए। तो उसके लिए क्या हो रहा है? ईजी, कोई भी सिस्टम नहीं है, चाहे वो ईस्ट का हो, चाहे वेस्ट का हो, चाहे चाइनीज़ हो, इसमें सारे सॉल्यूशंस हैं। तो आइडिया इज़ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंटीग्रेटेड मेडिसिन, जिसके लिए आप आए यहाँ पे। तो मैं सिर्फ इतना कहा कि आपको समाप्त करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि सिलिकॉन वैली के लोग यहाँ हैं। इंडिया में भी चेन्नई और जोधपुर में बहुत अच्छा काम हो रहा है। देविका बॉम्बे से आई हैं, कुछ लोग बेंगलोर से आए हैं। तो थैंक यू फॉर एवरीबडी टू बी हियर एंड प्लीज़ गेट रेडी टू रियली लर्न अ लॉट टुडे। थैंक यू। थैंक यू बख्शी साहब, आपको सुनना हमेशा अच्छा लगता है और एक नई ही कहना चाहिए अपने अंदर में ऊर्जा पैदा हो जाती है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। जब आप कर सकते हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं।
एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब वो रेड टी शर्ट वाली अवस्था में थे तब उनसे यहाँ पे कहना चाहिए ये सीढ़ियाँ चढ़ना भी मुश्किल होता था, पर आज वो पहाड़ पे भी चढ़ जाते हैं। 80 साल की उम्र में 60 साल को कॉम्पीट करना, उससे आगे बढ़ जाना, एक रियली ही नीड्स अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज। तो हमने देखा और जाना कि कैसे हिंदुस्तान की सरोजमी से उठे हुए नरेन बख्शी साहब ने अमेरिका में जाके भौतिक सुविधाओं के चलते, भौतिक संसाधनों के चलते रोगों, बहुत अच्छा अपना कहना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी ऊंचा किया, पर उसके साथ ही रोगों को भी पाया। और फिर से जब वो वापस मुड़े अपनी सरजमी की तरफ, अपनी तरह के खान पान की तरफ, उसी लाइफस्टाइल की तरफ, तो उन्होंने वो अचीव किया जो कि अनअचीवेबल हो जाता है। तो अब मैं एक और ऐसे ही शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रही हूँ जिनका नाम ही हमारे मान को बढ़ा देता है, जो कि हमारे देश की शान है और जिनसे मिल के दिल बाग बाग हो जाता है। विवेक शानबाग जी कृपया आएँ। ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तान से निकल के अमेरिका की सरजमी पे हिंदुस्तान की अलख जगाई और हमारे देश का नाम रोशन किया। खुद का तो खैर उन्होंने नाम रोशन किया ही किया, पर हमें भी बहुत ही गौरवान्वित किया। हमें बहुत खुशी है आज अपने बीच में उनको पाके। सर प्लीज़, द स्टेज इज़ योर्स। I'll have you show it. Okay, 1%. नमस्कार, मैं थोड़ा हिंदी में बात करूंगा, थोड़ा इंग्लिश में, थोड़ा इंग्लिश में बात करूंगा, ठीक है जी। तो मैं 16 बरस छात्र रह चुका हूं। I have been a student for 16 years. So I know that the usual attention span is 16 seconds. 16 seconds के बाद हम सभी हमारे हाथ में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मशीन है, स्मार्टफोन, उसकी तरफ चले जाते हैं। द स्मार्टफोन हैज़ इंक्रीज द नेचुरल स्टुपिडिटी इन ऑल ऑफ अस। तो हम थोड़ा सा स्टुपिड हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं जो आपको ज़्यादा छोटे छोटे किस्से बताऊंगा। आई विल शेयर सम salient bullet points and then I will invite more live interaction, because I think in today's age and time, live interaction is where more learning happens instead of lectures or presentations or plain PowerPoint presentations. So next slide, please. So I will be sharing 2 practical execution journeys. जैसे वाइस चांसलर शर्मा जी ने बोला कि हम क्लेम्स करते हैं, हम ब्लेम्स करते हैं, but what we really need is evidence. So I'm going to actually show some evidence of practical execution journeys that I have been on. मैंने जो प्रवास किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा. Then I will share 2 observations which have guided my life. मैं 1988 में US चला गया था. तब से अब तक 35 वर्षों में जो प्रवास मैंने किया है, जो मैंने प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन किया है, वो एविडेंस में आपको दिखाऊंगा. Then I will share
two sets of practical tips for you, जिससे आपकी भी और मेरी भी थोड़ी उन्नति हो जाएगी. So this is based on my 16 years of learning at 3 universities in India and USA, and 35 years of clinical practice in 3 countries, USA, India, and Japan. Next slide, please. No, it went. Okay. So this is artificial intelligence taking over. So just keep going up. Yeah. So we need to take on this third slide. Take it. So I know many of you are sitting far behind, so I'll have to read this for you. Okay, otherwise, because of Ayurvedic lifestyle, your eyes are already very powerful. But still, I will read it for you. So there are 2 practical execution journeys that I'm going to share. One is because practical execution is more convincing than theoretical discussion. हम सिर्फ यहाँ पे श्लोक बोलते रहें और ना उसका practical execution ना दिखाएं, तो it will not be convincing. So I want to share journey of clinical practice of integrative medicine. So I will share with you how my clinic teams in 2 states of US, in Washington state and in California state, how those 2 teams have integrated naturopathic medicine and allopathic medicine with Ayurvedic medicine. How we did that for 35 years. Second thing I'm going to share is journey of academic training, the university education in integrative medicine. So how currently our School of Ayurveda and Natural Medicine at University of Silicon Andhra is offering an integrated 4-year naturopathic medicine. This is the very first licensing program in US in Ayurveda. Next slide, please. So I have been in practice in the US for last 35 years. So the first one was in Seattle, Washington, where we had a team of total 13 doctors working under me. Then I worked briefly as a consultant for a Ayurveda and a yoga retreat in Goa, India. And then for last 11 years in California, San Jose, we have a team of 7 doctors working under me. In all the places, we have done integrative medicine, where under the umbrella of Ayurveda, we have integrated naturopathic medicine, allopathic medicine, and few other systems of medicine. Next slide, please. So this is Bastyr University of Naturopathic Medicine, where I studied naturopathic doctorate. After, when I went in 88, I had already completed my MD in Ayurveda. And so when I went there, there was no license for Ayurveda in the US in 1988. Even now, there is no separate license for Ayurveda. So I went back to a university and did a 4-year full-time training program called naturopathic doctor, after which I take board exams and I get license. So I did that in when I went there. And then after the first 2 years of training, I talked to the vice chancellor and the dean there, and I said, I have total 9 years of training in India in Ayurveda, and I would like to start a department there. And they encouraged me. So for the last 2 years of when I was a student, I was also the head of the department. So I must have been their first student as well as head of the department at the same time. So I started their Ayurvedic medicine department there, and these were my students there. So next one. So can you go back? Did we cross something? No, keep going back, keep going back, keep going back. Yeah. So now, these were my students. So the next one, please. Just one, yeah.
So we had students who were attending the courses in Ayurveda at the Bastille University, all in Ayurvedic medicine. And they would say, how do you pronounce Ayurveda? And I said, don't struggle your tongue to, because the Sanskrit word, specifically the Joda Akshar, is difficult for them to pronounce. So I said, Ayurveda is the nature, Ayurveda is the natural medicine of the East. So they were able to open their eyes and ears for it. And then we were teaching even Ayurvedic nutrition and cooking classes. Next slide. So we were teaching nutrition and cooking classes. Next slide. We even planted a Ayurvedic herb garden there, and we were teaching them about how to recognize and how to use Ayurvedic medicines. This is in Washington State. And then once I graduated, I set up my first clinic, which I ran for 17 years. And it was, the name was Natural Medicine Clinic. Under the umbrella of Ayurveda, we were integrating naturopathic medicine, acupuncture or oriental medicine, homeopathic medicine, and panchakarma, and all herbology. Next slide. So this was my team there in Seattle, Washington, where we had total 13 doctors, specialists in various specialties, and we even used yoga therapy there. And we were what is known in India as primary care providers, which was covered by insurance. Next slide. And then I did some activities in writing book. Next slide. And then was time when the university asked me to start my own academy. So we started the academy called Ayurveda Academy, and the logo of this was about integration. So if you read under the name Ayurvedic Academy, the motto was integrating traditional wisdom and healing with scientific research. So we were not just about talking Masprutva Yusho Vedam. So we were not just starting into history and the glory, but we were doing integration of Ayurveda with naturopathic medicine and allopathic medicine. And we had students who were allopathic doctors, surgeons, cardiologists. We had also students who were Oriental medicine or Chinese medicine practitioners. We had homeopathy experts who were coming to our academy. Next slide, please. Again, next slide. And so this was the National Ayurvedic Medical Association. On the board of directors of that, we tried to do the spreading of the information. Next slide. Going back. I can go one at a time. That's easy. Yeah. Okay. So we even established a journal there. And then for about 6 years, I was consultant for a place in Goa. And at that time, I used to work with the Ayush department and did some propagation of Ayurveda. There was a global propagation of Ayurveda and the World Ayurveda Congress. So now, for last 11 years, I am in California. This is a place where Naren Bakshi and many of the speakers here have visited. This is my current place of practice, where we have 7 doctors working with us, and we integrate under the umbrella of Ayurveda, naturopathic medicine and allopathic medicine. So after showing this journey of integration, I want to talk about our academic integration. So this is a university that is privately operated in the middle of Silicon Valley, called University of Silicon Andhra, which has been in operation for 21 years. And we have established a School of Ayurveda and Natural Medicine, which is offering a 4-year naturopathic doctor program. And then the next important thing that we are doing
is what is happening in the future, which is about integrating artificial intelligence with Ayurveda. There is a common misunderstanding that artificial intelligence will replace Ayurvedic doctors. No, artificial intelligence will not replace Ayurvedic doctors. Those doctors who do not know how to use artificial intelligence will be replaced by the doctors who are skilled in using artificial intelligence. So it is not artificial intelligence that will replace, it is the doctors skilled in artificial intelligence will replace those doctors who do not know how to use artificial intelligence. That is the real truth. So we all can learn it, because what artificial intelligence cannot do is self-motivation. Artificial intelligence is not self-motivated. Artificial intelligence does not have prana, tejas and ojas. So those forces are not there in the artificial intelligence. Only human beings have that. And if we use our prana, tejas and ojas for motivation to learn, whether it is artificial intelligence today or blockchain technology today or anything else that comes in the future, no one can replace the Ayurvedic doctors. And that is the reality. And so I have been working as an advisor for this artificial intelligence company called Live Your Best Life, which you have seen in your handouts. And so this is a platform which is using technology, cutting edge, scientifically backed formulations, integrates diet, yoga and lifestyle and wellness, very much like what Dr. Bala Pesala is going to speak about after my presentation. And then our work has been appreciated by Modi ji, Sonwal ji and Minister Naik ji. And then we have been in touch with Secretary Kotecha ji, and specifically in the main field where I am doing a lot of work is Goa, where the Chief Minister himself is an Ayurvedic doctor, Dr. Pramod Sawant. So I want to talk about the two observations that I have done during these 35 years that I have been in US. So during the 35 years, my two main observations are Ayurveda is the naturopathy of the East and naturopathy is the Ayurveda of the West. And I'll talk a little bit more about it. And then second observation that I have done is the comprehensive structure of Ayurveda provides an ideal umbrella for integrating other systems of medicine. And I have done that in all my 3 clinics. In Washington State, in Goa, and also again in California State, I have done that integration, as you saw. So the first one I want to talk about is why my observation is Ayurveda is naturopathy of the East and why naturopathy is the Ayurveda of the West. Because both of these systems have similarities. They have a lot of samya. And what is that samya? The first thing is that both the systems believe that each individual has a unique, and then again this is all about language. भाषा में सिर्फ फर्क है, लेकिन जो मूल तत्व है उसमें कोई फर्क नहीं है. जो the मूल तत्व ये है कि each individual has a unique mind body type, or in medicine they call it psychosomatic constitution, or in more technical language they call it biochemical individuality, or in Sanskrit we call it dosha prakriti. So that is known everywhere. For example, the Ayurvedic Vata Pitta Kapha are similar to the Chinese concept of Qi, Yang and Yin. They are also similar to the Western anatomical concepts of ectomorph, mesomorph and endomorph. The same thing is also very accepted in homeopathy, where they talk about homeopathic miasms. And then the modern cardiologists talk about, like Pitta Prakriti is called as similar to
type A personality. Kapha Prakriti is said similar to type B personality. And Vata Prakriti is felt similar to non-A, non-B personality. So when people talk in that kind of hi-fi language, we think it is scientific. But when Ayurveda uses the words Vata, Pitta, Kapha, people raise their eyebrows. That concept is very similar in most of the systems of medicine. Then, both naturopathic medicine and Ayurvedic medicine believe and understand that each individual has to maintain homeostasis, which is samya. Okay, have to maintain samya within. So in the pind or in the microcosm, so in the pind, okay, we have to have samya within our human body and mind. And also in the Brahman, that is in the macro universe, we need to have the same kind of homeostasis. So yata pinde tata brahmande. And then individual has an innate ability to heal with resources from nature. So both naturopathic medicine and Ayurvedic medicine believe that we don't have to depend on artificial things for healing. We can get healing from natural resources like diet, health routines, or ahara, vihara, then herbs, which is aushadhi, minerals, that is various dhatus, and then nutrients from animals, natural elements. So we can use all of these for healing. And both, in most of the diseases, you have to teach both the body and the mind. So we know that Vata, Pitta, Kapha are dealing with body, mind, and consciousness. And naturopathy also believes that. And then finally, the therapies have to be individualized. So there is not one treatment for all the patients who have the same symptoms. So you have to individualize it according to their dosha, dhatu, sattva, agni, bala, sattva, all of that. So those concepts are very common in both the systems. And then last couple slides I have is comprehensive structure of Ayurveda provides an ideal umbrella for integrating other systems of medicine. So there are few factors that make Ayurveda very comprehensive. First one is it addresses all the levels of an individual, which is anatomical level, physiological, biochemical, mental, behavioral, emotional, social, and environmental. Ayurveda covers the entire span, right from preconception. So we have the Garbhadana Samskara, from all the way we have to completely the final Samskara, which is the Anteshti Samskara or even Shraddha Samskara. Everywhere for the entire wellness of the person, there are guidelines in Veda. Then the time span, Ayurveda has the longest history of uninterrupted health care and disease care for almost 1/3 of world's population. So right from Middle East all the way till Japan, Ayurvedic principles have been used for thousands of years. And that is the proof of time. And finally, the significantly large population. So it is a very inclusive system. And in all my 3 clinics, I have had Western allopathic MDs work with me. I have had surgeons work with me. I had acupuncturists work with me. I have people who are trained in naturopathic medicine. They have worked with me and we never had any problem. Now I'll give you an example. Many of my classmates who did BMS with me at Karnataka University, they went to Bangalore and they did a 2-year course called Diploma in Emergency Medicine. And after doing the Diploma in Emergency Medicine, they did the reverse integration, which is they were doing mostly general practitioner, GP practice of allopathy, and under that general practitioner of allopathy, they were trying to integrate some Ayurveda by giving some Chandraprabhavati or Arogyavardhanivati or Dashamularishta or Drakshasa or using Haridra Churna. Or so the most of the thinking and diagnosis was done on allopathic basis during general practice in less than 5 minutes. And then they were trying to integrate Ayurveda by just giving or prescribing some Ayurvedic products. And that model does not work. Allopathic medicine does not provide an umbrella
to integrate other systems because it is not comprehensive. Whereas Ayurveda is so comprehensive that it provides an umbrella for other systems to integrate under Ayurveda. And so with this, in last 35 years, we have had a high success rate in treating various types of diseases, and our clinics get referrals from various specialists. So these are some things that I will later on use for answering questions. So I want to thank you for not looking at your cell phones, okay, for every 5 minutes. So thank you for paying attention. And I will be very happy to answer any questions now or later during the panel. I want to thank from my bottom of the heart to Mr. Naren Bakshi for giving me this opportunity to present here, and also Sanjeev Sharma ji inviting me, my good friends Bala Pesala, Dr. Deshmukh, Dr. Bagga, and our Guru Varya Dr. Khandel, okay, all of you, namaste from me, and I thank you all for being so patient. Thank you. आपको मालूम नहीं होगा, doing any innovative work requires lot of courage, lot of innovation. So I have seen him for last 5 years really fighting. So please give him standing ovation. He deserves standing ovation. Please get up. He truly deserves it. आयुर्वेदा वेस्ट में जा रहा है तो इन लोगों के कारण जा रहा है. His clinic is very close to me. I've gone there many times, and it is a true innovation. Thank you. I want to thank Naren Bakshi ji because when I first went to California or when I first went to US, people could not even pronounce the word Ayurveda, but now we have many allopathic doctors who are themselves our patients. There are many allopathic doctors who have graduated from my academy. There are many allopathic doctors who refer patients to us and who also want to work at my clinic. And in last 35 years, I'm happy to say that I have employed at least 6 allopathic doctors at various times. So Ayurveda has the power and Ayurveda has the ability. It is the prana, tejas and ojas in each of us as individual, and we can make the difference. So if you have the motivation, you can make it happen. Thank you. थैंक यू सो मच डॉक्टर शानबाग, आपसे मिलके हमेशा बहुत अच्छा लगता है. और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हर बार ऐसा नहीं होता कि इत्र ही महका करते हैं. हर बार ऐसा नहीं होता कि इत्र ही महका करते हैं. कुछ शख्सियत भी ऐसी होती हैं जो खुशबू दे जाती हैं. तो अब हम एक ऐसे अगेन फिर से हम एक ऐसे हेल्थ हीरो को लेके आ रहे हैं जिनका जज्बा, जिनका कहना चाहिए अटूट विश्वास और जिनके विचारों में है सैलाब, जोश है, उन्माद है, सपनों में उफान है. और ये एक कहना चाहिए चिकित्सा शास्त्र से इन्होंने चिकित्सा शास्त्र की न किसी पढ़ाई को किया है, सिर्फ अपने जोश और खरोश के बदौलत ये मुकाम हासिल किया है. जी हाँ, डॉक्टर बाला पेसाला जिनका नहीं है कोई मुकाबला, इनका कहीं पे भी कोई मुकाबला नहीं है. इनके नाम पे हैं 150 से ज़्यादा पेपर्स, 6-7 से ज़्यादा पेटेंट्स, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. और उससे भी बड़ी बात ये है कि ये जितने पैशनेट हैं, तो एक ज़माना था जिसे हम कहते हैं ना, आप लोग तो जानते हैं, पित्त प्रकृति के लोग, तो इनको पित्त प्रकोप से गुजरना पड़ा और उसके चलते काफ़ी बीमारियां भी थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी इस बीमारी को एक नए रूप में देखा और किस तरह से आगे बढ़े. उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कहना चाहिए प्रणेता है, पायनियर हैं, इन्होंने बहुत काम किया है. और इनका जो लेक्चर है
ये अपने आप में एक कहना चाहिए एक बहुत बड़ी हमारे पास में उपलब्धि है, एक बहुत बड़ा ट्रेजर है। वेलकम डॉक्टर बाला। Thank you so much. Good afternoon, everyone. I think थोड़ा energy कम हो गया है. We need some good Ayurveda drinks. So thanks for the nice introduction. I wear dual hats. I run a company called Ayur AI. I am also a professor at IIT Jodhpur, but really I'm a student of Ayurveda just like you. I get to learn every day from Ayurveda doctors, both in my company and also IIT Jodhpur. And here I really see the future of integrative medicine, and I'm very glad to be here today to share my thoughts, whatever I have learned as a student with you, and I hope that will benefit into creation of next generation of Ayurveda doctors who know artificial intelligence but also practice the ideas of artificial intelligence in their clinical practice. So today I'm going to spend some time redefining what AI means in Ayurveda. So I don't consider AI as artificial intelligence. After all, it's created by humans, right, like us. It's an augmented intelligence which can help assist both Ayurveda doctors and students in redefining their health. As Dr. Vivek said, I don't believe that Ayurveda is just an Indian system of medicine. It has the potential to become the international system of medicine, and for that, we have to upgrade our skills to the latest advances in the field. So people ask me, as an engineer, how did you get into Ayurveda? So I go back, it's almost 13 years. I finished my PhD. As you're all students, you can understand, we don't have a regular routine in PhD. So I used to sleep at 3 o'clock in the morning, get up at 12 o'clock, not eat breakfast. So I came back to India and I started similar lifestyle without realizing that has tremendous effect on the health. So I got, being from Andhra, I used to eat a lot of spice. In fact, every time I go to my hometown, my mom gives this nice red chutney. Every time I eat it, I used to get stomach pain. I used to keep telling, something is not right in Nellore. That's where I come from. Then I used to go back and used to be fine. Then suddenly, after 2-3 weeks, used to feel a lot of pain. Then I went to a modern doctor. He said, you have something called chronic gastritis. I said, what is chronic gastritis? He said, it's, all of you know, it's an ulceration that has been there for last, 3-4 years. I said, wow. So he said, I will cure you. I will give you tablets. You can go back next month and eat your biryani. I said, wow, great. So I kept on taking tablets. 3 antibiotics, 4 antibiotics, 5 antibiotics, 6 antibiotics. Nothing helped. So I took so many medicines in the span of 5 years that had tremendous effect on my health. So I got my gut tested. I think, how many of you heard of gut microbiome test? Anybody heard gut microbiome test? Yeah, it's becoming very popular these days. The bacterial cells that are there in your body are equivalent to number of human cells. So they define to a large extent what health is for us. So I did a gut microbiome test and I failed in the test. You can see my score, negative 2.6. And you see most of the metrics
that define your health in terms of, bacteria that produce vitamins, bacteria that keep your mental health better, everything have gone down because I've taken so many antibiotics. Then I said, I'll stop everything. I'll not take any medicine. I did not get better. Then my mother-in-law one day said, go see an Ayurveda doctor. I said, what? I'm not going to go and see an Ayurveda doctor. I'm a modern scientist. I don't believe in Ayurveda. He said, no, you have to go. My daughter's future is at stake, right? When your mother-in-law says, something, you have to listen, right? Your mother, okay, you can ignore sometimes, but mother-in-law, you have to listen. So she pushed me. I went to an Ayurveda doctor. I had very little hope. Within 1 minute, he changed my perception of Ayurveda. He didn't know anything about me. He just looked at my pulse. He's able to tell the entire 6 years of history, zero cost, no test ordered. I said, this is fantastic. You have an Ayurveda doctor, no need for modern instruments, and he's able to tell the entire health. I said, this got to be amazing. As an engineer, right? Your hand is a sensor. Your mind, is the artificial intelligence essentially, right? And they are able to diagnose diseases. I said, this is great. This is something I need to work on. So I left my job, resigned from my CSIR government job, and I started this company called Ayur AI. And what did I do? I said, in God we trust, in God we all trust, but everybody else must bring data. So what I did is I started a clinical study in another university, which I'm an adjunct professor, SRM. I said, I'm going to register myself as the first patient in that. I'm going to track my blood markers, I'm going to track my symptoms, and then see what happens, right? So this is what happened. So we did all the best tests. Within 3 months, my symptoms decreased, my inflammatory markers decreased. I also had, other side effects, anemia, etc. It all improved. I said, this is the proof. So we did the same study for 500 subjects, and I'll show some of the data. It's amazing, irrespective of the disease. You have an integrative and personalized framework that helps cure a lot of diseases. So that's the beauty, I think, of Ayurveda. As we all know, the current healthcare, right, has done tremendously well. Right? We are living longer. We call it lifespan. But are we really living healthier? My mother, she is 68. She takes 20 tablets a day. 20 tablets. So if we think of, above 60, all we think of, taking tablets, going to hospitals, going to ICUs. This is not the way we need to live. And I think Ayurveda has great framework where you can help people tremendously. And if you look at a lot of the diseases that are happening, non-communicable diseases, lifestyle disorders, have great potential. And a lot of times people don't know that they have a problem. Right? Recently there was a study done. 350 million Indians are suffering from prediabetes, diabetes, dyslipidemia, hypertension, without a lot of them not knowing. And unfortunately, right, we are used to taking a single pill. We hope that a single pill will cure us, but unfortunately, you can probably decrease the symptoms, but you don't achieve the cure in a fundamental way. And that is where we need a new approach to health. In a sense, the new approach to health is already the approach that we have been following for the last 2000 years. Recently, there was a study done. If you can keep people healthy for 1 year, just 1 year, you can save $38 trillion. $38 trillion. Imagine the amount of, suffering, amount of money that you could save. But we don't have a paradigm where we can keep people healthy. So current medicine is very good at treating diseases. But if you ask, what is health? Health is unfortunately defined as absence of disease. Right? In Ayurveda, you have a beautiful definition. Right? Your dosha, samadosha, samadhatu, samagni. So all these components, right, have to come together to keep you healthy.
And the modern approach had been, we'll take a lot of data sources, we'll take your blood markers, we'll take your genetic markers and try to define health. But it has not been successful. In fact, this has been already acknowledged. Just 2 weeks back, there is a prize launched, $100 million prize for keeping people healthy. Right? Amazing. And you can see, if you can read it, right, all the disadvantages of the current approach to health is emphasized here. So what needs to happen, the integrative medicine, combine the modern science and leverage the 2000 plus year old Ayurveda science to give personalized health and wellness. I think that is the only way we as a civilization are going to be healthy and productive. So that's the mission that we started, Ayur AI, health, taking advantage of the artificial intelligence. Our mission is to impact billion plus people, and I strongly believe, we also have colleagues from Libel. So glad to see the shared mission and the wonderful work they're doing. So happy to learn from them every time I meet. And I think this is a community that needs to be created, not just a single Libel or Ayur AI. I'm hoping that, a lot of the students are going to become entrepreneurs, are going to help reach the scale that Dr. Shanbag was referring to, right? Also Dr. Naren was talking. People know yoga. Marketing was done extensively. People know meditation. I think we have Dr. Shanbag, Libel, and other people trying to give a consolidated, comprehensive message that Ayurveda is much more than just physical, mental aspects. It is the way of life. And how do we achieve that? That has been our goal. So we leverage Ayurveda principles, but we take advantage from the blood markers, from the genomic markers that you're generating, and use AI, because when you have so many data sources, right, a single metagenome, right, you have seen my report, it generates 1.3 GB of data, 1.3 gigabytes of data. You cannot expect a human to analyze it. You have to leverage the AI algorithms. And all these data sources are combined and you give personalized recommendations. So before I talk about AI, I think we have to be very clear on understanding the science. AI without science basis is just a black box, right? And especially in medicine, it will not work. So as a professor, I always show one equation in my presentation. I think all of you are familiar with how theories are developed, right? So we have Tridosha theory, and people ask me as an engineer, explain, right? So this is what I tell them. I give them an analogy. All of you know gravitational theory, right? Anybody doesn't know gravitational theory? We all studied, right? Okay. So when Newton proposed gravitational theory, people asked, what is the source of gravitation? Right? So then it took 200 years for Einstein to come and say, gravitation is nothing but energy. Concentrated energy is gravitation. Then what is concentrated energy? Then string theory came and explained what is concentrated energy in terms of the strings. So I think we are at the similar cusp in Ayurveda. Ayurveda is understood certain way, but I think it's also important for us to have a common language when we're talking about integrative medicine. How do we understand the doshas? Are they forces? Forces that drive various processes? Are they energies? Or the combination? So to me, I think this is where a lot of you can help in generating the evidence which we understand in modern science. It's not that evidence is not there. For the last 10, 15 years, so much evidence has been done. Essentially, you take extreme Prakriti types and then you look at various data sources, whether it's blood biomarkers, whether it is genomic markers, whether it is epigenetic markers, and all of them are shown to differ in different Prakriti types, which gives a strong scientific basis for Tridosha theory. But much more needs to be done, and I'm sure with all the research that you are doing at this institute, this is only the data that's going to only add. So the way I understand Ayurveda is based on phenotypic characteristics, right? So when you go to a doctor, they analyze various parameters. We call each of these parameters as phenotypic features. And how does this phenotypic feature arise? So you have genes, and genes express proteins, and proteins interact, and you have a cell, and cells become tissues,
And this tissue organization and subsequent nonlinear interactions is what creates a phenotype. So that's what we see in our body. We have a dry skin phenotype. We have a phenotype who is bulky. We have a phenotype whose digestive power is very high. So each of these phenotypic characteristics you can actually trace back to certain genes. So that's what we're also doing at IIT Jodhpur, to find a common language that unites Ayurveda and modern language. I think Nadi Pariksha is beautiful and you have so much to discover. So as an engineer, people ask me, how can a doctor put fingers at single place in the body and can tell about entire body, right? So you look at it as a closed system, right? So in engineering, we call it a closed loop system. That means the blood is circulating. Any place where you have a sensor, it can get the information from the entire body. So essentially what is happening in pulse diagnosis is when you have a particular disease, there are changes in the local vasculature that is happening in that place. And that changes actually cause something called back reflections or signals. And that is what the Ayurveda doctor, is trained Ayurveda doctor, can sense and tell, yes, this particular organ is affected, and you can diagnose without costly medical equipment. So at IIT Madras, we have a colleague who is looking at whole system modeling to understand what is the scientific basis for Nadi Pariksha. Okay. So I'll show 2 slides in terms of evidence that we have generated. We have looked at 500 subjects. We started looking at what is common in all diseases, all chronic diseases. Inflammation. So in modern terminology, we call it inflammaging. So we said that let's look at patients. We have looked at 60 patients before and after Ayurveda treatment. In all the 60 patients, right, we tracked inflammatory markers. Of course, we chose a set of diseases, diabetes. You can see before treatment, after treatment, how inflammatory marker decrease. Again, same with gastro diseases, before treatment, after treatment. So this is a great example of combining the Ayurveda framework and tracking and producing evidence. So we also looked at the treatment duration. See, a lot of times we find that patients take Ayurveda medicine for a month and they expect miracles, right? So we tell them it takes time because you're not just reducing the symptoms, you're trying to in a sense, reset your body. So treatment duration is very important. So you can see the difference between 2 months and 3 months. So this is the first of its kind study where we looked at inflammatory markers and in the process of publishing this. So there is enough evidence. So now let me talk about AI. How do the doctors diagnose disease, right? So to me, whether it's a modern doctor, an Ayurveda doctor, they're statisticians, extremely good statisticians. They have domain knowledge, they have clinical knowledge, and they're trying to diagnose diseases, right? So you can read the definition, modern definition. Essentially, you are taking advantage of certain domain knowledge, certain labels. Patient comes and says, I have the symptoms. And then you are doing AI in your brain to say that, yes, this symptom and this cause and this family history is what gives you a particular disease. But, not all doctors are the same, right? You need a lot of expertise, especially in a system like Ayurveda. So there are certain disadvantages. Right? So there is bias, there is, limited time, right? Especially in a country like US, there is a statistic. On average, a doctor spends 7 minutes with a patient, just 7 minutes. So that is where AI can play a significant role. You have models. So this is something that is, these terms you will hear, if you have not heard, machine learning, right? So if you look at machine learning algorithms, so whether it is KNNs, SVMs, etc., they can all be used in Prakriti determination, drug recommendation engine. You also have something called deep learning algorithms, right? How many of you use deep learning? Have you seen a deep learning algorithm at play? No? Okay, so I'll tell you, all of you have used it. When you take a selfie, right? I think a lot of phones have a box that comes, looking at where the face is localized. That's actually a deep learning algorithm trying to understand where your face is. All of us is used, benefited from it. So same deep learning algorithms can be used for Prakriti determination, Vikriti determination, disease prognosis.
how long will it take for me to get cured, and what is the recommendation engine. So also some examples where we have used machine learning. So we take all the features from the doctor. Essentially the doctor tells, yes, these are the features. And once the features are given, you can give it to a machine learning algorithm. It will tell you what is the weights for each of the features, because if you ask an Ayurveda doctor, this feature versus this feature, it's very hard for them to explain the weights. But a machine learning algorithm can derive weights. So that's how you can determine the Prakriti. Same thing you can do with Vikriti, right? You have symptoms, you also have pulse. So all this information, you can give it to a machine learning algorithm, and it can tell you what is the dosha imbalance that is present in your body. How many of you heard of generative AI? Naren ji heard it. Students? Generative AI? Okay. How many have heard of ChatGPT? Wow. ChatGPT is nothing but generative pre-trained transformer. Okay. So essentially it generates things based on the knowledge. And I strongly think that generative AI, things like ChatGPT, MedPalm, these are large language models. That means you feed data and it will give you results. So all of you have used ChatGPT, right? So just today morning, I asked ChatGPT. You can use it as a diagnosis, first level, right? Not to replace the doctors, but can augment your knowledge. Patient is presented with severe pain, bloating, etc. What is the possible diagnosis and recommendation? That's all I have given. You see how beautifully it has come up with solution. Says first, I'm not a doctor, right? So there is, built-in a sense, caution. See all the diseases it has listed. Right? Then I said, purposefully I said Ayurveda recommendations. I didn't say modern recommendations. So you see what ChatGPT has done. It first described what is Ayurveda. And it says, I cannot determine, but first you should know the Prakriti. Right? In fact, it says that. First you should know the Prakriti of a person. And it says, right, it's challenging to provide personalized recommendations without knowing all this. But nevertheless, I will give you recommendations. So it says diet, herbs, lifestyle, hydration, Ayurveda therapies. You can see how beautifully it has described what are all the possible solutions. Right? Even when you are just starting, you can ask, of course, deeper questions. You can ask, what is the Ayurveda herbs that are used for particular disease? So I think this is something that's going to revolutionize Ayurveda practice, if you ask me. This whole large language models which are trained on tons of data. I remember during COVID time, I was at the time in CSIR, we were all, scrapping for medicines, right? People didn't know what medicine they should take for COVID. But a lot of Ayurveda doctors, in fact, even Dr. Mahadevan, who is our clinical advisor, has treated hundreds of patients. So how do we understand, right, a particular drug, how can it affect new disease? So this is where AI can again play into role. Huge opportunities. So Google has released something called AlphaFold. Million+ proteins are actually, structures have been given by AI. And if you go a little bit further, right, you can take an Ayurveda drug, a lot of companies are working on it, identify the bioactives and see where they actually bind and repurpose the drug. Right? So I'll show one formulation that, our colleagues at IIT Jodhpur are doing. So you can take an Ayurveda drug, put in a petri dish and see what is the pathways it is exciting, and you can map common pathways. So through this process, they have discovered, Sesame plus Ferreira as one of the possible medicine for COVID, and it has given good results. Same thing with Ayush 64. At IIT Jodhpur, we have actually mapped the drug interactions. So tremendous potential. You can not only discover new drugs, you can repurpose the existing Ayurveda drugs for new diseases. Today we have COVID. Tomorrow that could be some other disease. But if you understand the pathways fundamentally, you can do drug repurposing. And I hope some of the students can work on this drug repurposing for unknown diseases. So this is a slide I presented to Minister of Ayush. I said, you have tons of data, right? Can we take all this data and give a recommendation engine? I give a simple example. In Delhi, if you go during Diwali time, that's when actually a lot of respiratory disorders elevate because of high amount of dust, etc., etc. Can we give 2 months before Ayurveda recommendations so that you can tone down the inflammatory response of the body
and can ensure that people don't get sick. So these are the sort of recommendations that we are working with Ministry of Ayush to give on a population level so that you can prevent the occurrence of chronic diseases. So I'll spend the last 3-4 minutes on talking about what we are doing at Ayur AI. We have a very lofty goal. We want to make everybody younger by 30 to 50 years. Right? Already Narenji has made himself younger. But we also want to ensure that this benefit extends to everyone and prove it using hard data. So there are 2 solutions we are working on, wellness and chronic disease management. So this is the app that we have developed, our first pilot version. What we are doing is we are combining both Ayurveda and modern diagnosis. We are taking the advantage of both Ayurveda data points and modern data points and giving personalized and holistic recommendations. That includes diet, herbal supplements, yoga, meditation, etc. So this is how our app looks. So it has everything integrated. If you don't have the integration, I think you will not see the benefit that it's supposed to give. So this app, if anybody wants to try, you can search iWell. It's available in Google Play. If you have an iPhone, any students have an iPhone and want to try it, you can go to this link, app.iwell.in. It's still at the early stage of development. We would love to hear your feedback in terms of what can be improved further. And we have a couple of Ayurveda doctors in our company who are helping us to tune this app on almost everyday basis. So let me see if I can just show a quick glimpse of the app. So this is how the app looks. And I know similar apps are being built by Libel. So we need more such applications where the health information is at the fingertips of an individual. And that is very important because we get busy in our daily schedules and we don't always go to a doctor. We forget going to a doctor. It will take 1 month, 2 months, 3 months unless we are really sick. So this is the application that we have developed where it will give you recommendations. Most importantly, right, there is an Ayurveda doctor who plays a key part. It's not that the AI will tell everything. There's an Ayurveda doctor. You can do consultation. You can also assess various parameters. You can also input your parameters. And through that, we understand your health and we give certain recommendations. Then you can get consultation with an Ayurveda doctor who can further improve your health. Right? So this is how the app is. Happy to answer any questions later. This is my last slide. I welcome all of you to visit IIT Jodhpur. I'll tell you, after I resigned from CSIR, one day Dr. Kotecha called me to his office and said, we should do something in IIT. I said, sure. So he proposed this idea called Ayurtech. How to combine the best of technology institutes like IITs and best of institutes both in modern medicine, AIIMS Jodhpur, Ayurveda University at Jodhpur. So this is a consortium of not just technologists but Ayurveda doctors and AIIMS Jodhpur to create this first of its kind center of excellence. This is the first one that is created in the whole world where you have IIT graduates working on Ayurveda hand in hand with Ayurveda doctors and modern doctors. Right. So after this initiative, they're planning to expand to multiple IITs, but something really interesting happened. Inspired by this, all AIIMS are starting an integrative medicine department, where the patient will be seen both by Ayurveda doctors and modern doctors to cure the diseases. So the goal of the center is to establish that basic science. How do we understand Ayurveda and modern perspective? So specifically because we are looking at metabolic disorders, understanding how drugs work, understanding how diagnosis is done, before and after certain Ayurveda procedures, right? We are going to take data of 1,000+ patients and understand their blood markers, gut microbiome markers, transcriptome markers to understand and give proof that this is how Ayurveda works. And we are very fortunate to have extremely good combination of people from various departments. There are close to 6 departments participating: computer science, electrical engineering, chemistry, bioscience in this center of excellence. So with that, thank you for your patient hearing. I also like to thank CWC team, Narenji,
Kalaji, Sharadji, Rashmiji, a lot of people, it's very hard for me to thank everyone. I'd also like to thank NIH Jaipur, Dr. Sanjeevji and the entire team for giving me this opportunity. Also a lot of mentors, Dr. Vivek, I always learn a lot from him, Dr. Bagga and all our colleagues. And most importantly, I hope you got inspired what it takes to become the next generation of integrative medicine doctor. And I'm sure a lot of you will start companies and will change lives for good. Thank you for your attention. Thank you. We are running short of time, so I'll request the audience to shoot any questions you want to during the panel discussion. I hope you have noted the phone number which we had shown you earlier, the start of the program. इसके पहले कि अभी पैनल डिस्कशन के लिए मंच पे सज्जा हो, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। और ये है वैद्य राजेश कुटेचा जी का पत्र जो हमें प्राप्त हुआ। हम उनके बहुत आभारी हैं। हमारी इच्छा थी कि वो स्वयं यहाँ पे उपस्थित होकर हमारा मान बढ़ाते, पर कुछ आवश्यक कारणों से ऐसा हो न सका। पर हम बहुत उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने समय निकाल के हमारे लिए ये पत्र प्रेषित किया। और अब मैं हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगी। सर्वप्रथम द ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ द NIA, प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, टू चेयर द सेशन। एंड हम आपसे कुछ प्रश्नों का समाधान भी चाहेंगे सर, प्लीज आए। सीनियर वेटरन वैद्य श्री कृष्ण खंडेल साहब, 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट। डॉक्टर खंडेल को कौन नहीं जानता। उन्होंने चरक संहिता को मॉडर्न लैंग्वेजेस में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में अक्रॉस द बॉर्डर लाने का जो बहुत ही बड़ा कार्य किया है, उसके लिए जितने तालियां बजाई जाएं, जितना उनका अभिवादन किया जाए कम है। साथ ही अब आमंत्रित कर रही हूं डॉक्टर विवेक शानबाग जी को, जिन्हें आप सबने सुना है, जो पूर्व और पश्चिम का अद्भुत संगम है और एक खुद की अपनी उन्होंने ही इज़ द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रोफेशनल्स। ही इज़ अगेन गोल्ड मेडलिस्ट और विश्व आयुर्वेद रत्न अवॉर्डी भी हैं, साथ ही बेस्ट सेलिंग ऑथर भी हैं। और जिनसे अभी आपने कहना चाहिए, जिन्होंने आपको सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था, अपनी वार्ता से अपनी सीट पे ग्लू कर दिया था, नन अदर देन यंग एंड डायनामिक डॉक्टर बाला पिसाला। इनका खोलो 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 खोलो, इनका खोलो। अच्छा, और ऐसे इंसान जिन्हें हम कहते हैं कि जिनकी वाणी में न सिर्फ विनम्रता है, मिठास है, व्यक्तित्व में एक अलग सी कशिश है, जिनका हर्षित मुख है, और वो हैं डॉक्टर देविका देशमुख। डॉक्टर देविका यूट्यूब चैनल की एक बहुत ही अच्छी, कहना चाहिए,
वहाँ पे उन्होंने आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया है और जो भी उन्हें सुनते आए हैं वो जानते हैं कि कितने सरल तरीके से वो अपनी बात कह जाती हैं और लोगों का दिल जीत लेती हैं। डॉक्टर देविका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीट इधर है। यूं तो जिंदगी में हर कोई जीता है, पर ये जीना भी कोई जीना है। जीना तभी सार्थक है जब आप जीने का मतलब समझ पाते हैं, और जीने का यही तरीका सिखाता है LYBL। जी हाँ, LYBL से हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक लल्ला जी, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड आयुर्वेदाचार्य हैं और सबको जीवन जीने की पद्धति सिखाते हैं। He is former chief consultant, Ayurveda pharmacy, chief physician, and has got specialization in the gut and musculoskeletal disorders management. तो आज हमारे पास में मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर मैनेजमेंट वाले दो शख्सियत हैं। एक हमारे अपने संजीव शर्मा साहब, जो कि जिन्हें कि हिमाचल के ऑर्थोपेडिक सर्जन्स में भी प्रथम स्थान प्राप्त है, और दूसरे अभिषेक लल्ला जी। तो आज का जो ये हमारा पैनल डिस्कशन है, हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। एक बार फिर मैं कहूँगी कि आप एक नंबर हम दिखा रहे हैं, उसको आप नोट कर लें, और अगर आप हमारे पैनलिस्ट से कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई भी अपना समाधान चाहते हैं, तो निसंकोच होकर के प्रश्न इस नंबर पे कर दें। हमें उसे सम्मिलित करने में बहुत खुशी होगी। तो आप सब पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है कि आप सब ने इस मंच की शोभा बढ़ाई, और न सिर्फ मंच की शोभा बढ़ाई, हमारे दिल कहते हैं ना 56 इंच का, क्या नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं, हमारे तो उससे भी ज़्यादा हो गया, दिल बाग बाग हो गया। तो सबसे पहला प्रश्न शर्मा साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने तो 90 का दशक भी देखा है। उस दशक में जब आयुर्वेद का कुछ बोलबाला होता था, फिर उसके बाद में एक ड्रॉप डाउन भी देखा, और फिर उसके बाद फिर से जो उसमें एक अपसर्ज देखा है। तो आपकी ये जर्नी के बारे में, क्योंकि हमारे जो दर्शक बच्चे हैं यहाँ पे, उन्हें तो पता है, पर जो विशिष्ट जितने भी जो अतिथिगण हैं वो उस बारे में इतना नहीं जानते होंगे, तो आपकी राय बहुत मायने रखती है। आप बताएं कि ये जर्नी कैसी थी, और क्या क्या उस समय डिफ़िकल्टीज आई, और क्यों ऐसा समय था कि जब आयुर्वेद को लोग बाग झोला छाप में इंक्लूड करने लगे थे। धन्यवाद मनीषा जी। ये बात सही है कि 90 से अभी तक की एक जर्नी, हमारी जर्नी, या मेरे साथ के जो लोग हैं या मेरे वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने वो ज़माना देखा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आयुर्वेद को लोगों ने झोला छाप की दृष्टि से देखा हो। ये मेरी हम्बल सबमिशन है। आयुर्वेद एक महान चिकित्सा पद्धति रही है। ये ठीक है कि कुछ झोला छाप चिकित्सक पैदा हो गए जो ना तो क्वालिफाइड थे, ना इस तरफ से क्वालिफाइड, ना उस तरफ से क्वालिफाइड, और आयुर्वेद के नाम का दुरुपयोग करके जो अब भी बहुत सारा हो रहा है, उनके कारण ये जरूर ऐसा कभी लगा होगा। लेकिन आयुर्वेद एक प्राचीन काल से ही एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है, थी और आगे भी रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं। हमने कभी आयुर्वेद चिकित्सक होने के नाते कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि हमें किसी ने इस तरह से कहा हो या हमारे बारे में किसी ने महसूस किया हो। ऐसी कभी परिस्थिति मैडम आई नहीं। ये ठीक है कि जो पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति है उसका उत्थान बहुत शीघ्रता से, और जो आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति है या आधुनिक जो दूसरे विज्ञान भी हैं उनके सहयोग से बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ। खास करके डायग्नोस्टिक्स में, इमरजेंसी मैनेजमेंट में या सर्जरीज में
या फिर एविडेंस जनरेशन में। तो उस कारण से आयुर्वेद के जो लोग हैं शायद उतना वैज्ञानिक सहयोग दूसरे बेसिक साइंसेस से सहयोग मिलना चाहिए था, वो या तो बेसिक साइंसेस से सहयोग नहीं मिल पाया या आयुर्वेद वालों ने नहीं लिया, या दोनों तरफ कुछ कमियां रहीं। इस कारण से, और भी बहुत सारे कारण, चाहे वो राजनीतिक कारण हो या कुछ भी हो, उस कारण से ये जो चिकित्सा पद्धति है उसका थोड़ा सा एक वो रहा। लेकिन आज का जो परिप्रेक्ष्य है वो, उसमें एक आवश्यकता है कि हम आयुर्वेद वाले और दूसरे जो साइंसेस हैं, जैसे आज बालाजी यहाँ हैं, अगर हम बेसिक साइंसेस या जो मेडिकल साइंस है इनको इंटीग्रेट करते हैं तो निश्चित रूप से, अगर हम कल्पना करते हैं भारत को विश्व गुरु बनाने की, तो भारतीय जो ज्ञान परंपरा है जिसमें आयुर्वेद एक कंपोनेंट है, उनको आगे लाने की, तो हम भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर ही, अपने मूल के आधार पर ही हम विश्व गुरु कहला सकते हैं। आधुनिक जो रिसर्चेज, आधुनिक विज्ञान में जो रिसर्चेज हो रही हैं, जो उसमें बढ़ावा मिल रहा है, उसमें विदेशों में भी बहुत सारा काम हो रहा है। और लेकिन आयुर्वेद का काम मूलतः ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमें करना है, और उसके लिए हमें जो दूसरी साइंसेज हैं, बेसिक साइंसेज हैं, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग चाहिए और हमें लेना पड़ेगा। जैसे बालाजी ने थोड़ा सा यहाँ एक बड़ा संक्षिप्त अपना एक यहाँ प्रेजेंटेशन दिया, और उस माध्यम से हम ये समझ सके हैं कि अगर हम मॉडर्न साइंस कहने का मेरा मतलब वेस्टर्न मेडिसिन से नहीं है, सिर्फ उनसे भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन जो बेसिक साइंसेस हैं उनसे अगर हम इंटीग्रेट होकर के चलते हैं तो ना सिर्फ हम अच्छे एविडेंसेस जनरेट कर सकते हैं, बहुत अच्छे टूल्स, या जो ऑब्स्टेकल्स हमें बहुत सारे आते हैं अपनी, चाहे डायग्नोस्टिक्स हैं, चाहे ट्रीटमेंट्स हैं, चाहे प्रेडिक्शन ऑफ द डिजीजेस है, जैसे अभी इन्होंने बताया कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बहुत पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आज मॉडर्न साइंस भी इस पे बात कर रही है, जीन्स पे काम कर रही है, जीनोम्स पे काम कर रही है कि आगे डिजीजेस को कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और वेल इन टाइम हम उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आयुर्वेद भी यही कहता है। लेकिन साइंटिफिक टूल से, साइंस के माध्यम से अगर हम अच्छी तरह प्रेडिक्ट करना सीख जाते हैं, अच्छी तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो दैट विल बी ए बिग कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, और हम आयुर्वेद की सार्थकता भी सिद्ध कर पाएंगे। और हम ये मानते हैं, हमारा व्यक्तिगत, इसलिए नहीं कि हम बायस हैं आयुर्वेद के प्रति, लेकिन जो सिद्धांत आयुर्वेद में स्वस्थ रहने के हैं वो शायद दूसरे किसी भी चिकित्सा विज्ञान में नहीं है, क्योंकि हमने भी मॉडर्न साइंस का भी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है, दूसरे जो मेडिकल सिस्टम्स हैं उनका भी कुछ पढ़ा है, लेकिन जो शाश्वत सिद्धांत आयुर्वेद में है वो उनका मुकाबला कहीं नहीं है। लेकिन आज आवश्यकता है इंटीग्रेट करने की, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे दूसरी बातें हों, उनके साथ इंटीग्रेट करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो हमने ये जाना कि हमारे जो पाश्चात्य, कहना चाहिए हमारे ऊपर थोपा गया मैकाले सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उसने हमारी सोच को बहुत प्रभावित किया, और इसके कारण हमारा अपना जो एक कहना चाहिए विश्वास अपनी पद्धति पे, अपनी संस्कृति के ऊपर से उठता सा गया, और उसका खमियाजा हमें ये भुगतना पड़ा कि हमारी धरोहर हमसे कहीं ना कहीं छूटने लगी। अब इसके बाद में मैं मुखातिब होती हूँ डॉक्टर बाला की तरफ कि आपको क्या लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कितनी लाभदायक हो सकती है इंटीग्रेशन में? The way I see it is, a doctor, let's compare modern doctor with an Ayurveda doctor. Modern doctors are usually specialists in a particular disease. You have gastroenterologist, you have a diabetologist. But Ayurveda doctor is a Dashavatar, probably 100 avatars he has to take. They have to diagnose all the possible 1,000+ diseases with 10,000+ symptoms. It is not possible for a single doctor to assimilate all this information. So it takes long time. Like Dr. Shanbag has been practicing for 35 years. I expect the same level of expertise from an Ayurveda doctor who has just started. So I think that's where the artificial intelligence becomes augmented intelligence, where the doctor can take inputs from artificial intelligence
And all that data can be used to give the best possible diagnostic decision and also prognostic decision. In terms of, in modern medicine, we call it patient like me. In Ayurveda, it's already there, right? If you know your Prakriti and Vikriti, you give personalized recommendations. Modern science is just realizing what is patient like me. It's the same metformin that is given to all diabetes. So the personalization aspect is where AI can really help, because it can not only look at the domain knowledge, what is written in Charaka Samhita, what is written in Sushruta Samhita, but it can also look at the clinical data that is generated. For example, we have so much data that is being created by Minister of Ayush clinical centers. So we know what is the Prakriti, we know what is the Vikriti, we know what drugs are given to each individuals. And once you have all this data, whenever a new patient comes, the AI can sift through all millions of data points and says, this Prakriti, this Vikriti, this symptoms, this is the best possible recommendation 1, recommendation 2, so that the doctor can give the best possible outcome to the patient. So that's where I think AI can play a role. वेरी ट्रू. तो हमने देखा कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि बहुत सही बाला ने कहा कि ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस है. आर्टिफिशियल क्यों बोलते हैं? कि कृत्रिम थोड़ा ही है, गलत नहीं है, ये आपका सिर्फ बढ़ाती है, ऑगमेंट कर रही है. तो इसमें यदि हम हमारा डाटा एनालिसिस करते हैं, हम उसके अंदर में एड ऑन करते हैं, तो हम ना सिर्फ एक कहना चाहिए हमको रिकॉर्ड कीपिंग हमारा बहुत अच्छा होता है, एनालिसिस बहुत अच्छी होती है, उससे हमारा पेशेंट केयर भी बहुत सुधर जाता है. तो डॉक्टर शानबाग, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने तो देखा है ईस्ट में, वेस्ट में, तो वेस्ट में जब आपने शुरू किया था, तो जैसा आपने अपने कहना चाहिए जो आपका वक्तव्य था उसमें भी आपने बताया कि हमें वही भाषा में बात करनी चाहिए जो सामने वाले की समझ में आ जाए. अगर हम अपनी भाषा में उनसे बोलते रहे तो उनके सिर पे से गुजर जाती है. हम सोच रहे हैं उनको हमने बहुत अच्छा बताया, पर ऐसा होता नहीं है. तो आपके सामने वहाँ पे क्या चैलेंजेस थे? तो थे से बजाय मैं बोलूँगा कि अभी भी हैं. अभी भी आयुर्वेद के सामने जो चैलेंजेस है वो भाषा के ही हैं, क्योंकि हम पूरे जगत से संवाद नहीं कर रहे हैं. बिकॉज देयर इज़ द लैंग्वेज बैरियर ऑफ यूजिंग संस्कृत टर्म्स. And what I experimented when I went there in 1988-89 is to share all of the wisdom of Ayurveda, or to teach Ayurveda without using a single Sanskrit word. And that was a challenge. So I would talk about that this is a natural healthcare system that was developed not by Brahmashma Swayudvedam, but was developed by sages who for thousands of years observed the nature within us and observed the nature around us, and then came to understand that there were some governing principles in the outside universe, and the same governing principles were existing in us. There were some physical elements outside and there are physical elements inside us. And we can talk about the governing principles as earth and water. They are not exactly as earth and water, but they have the principles, or they have the attributes or qualities of that. And then there are the governing principles of water and fire, and then there are the governing principles of air and ether. So I was able to convey the concept of Prakriti, the concept of Vata, Pitta, Kapha, the concept of increasing Satmya, or the concept of bringing Samya, without using any of these Sanskrit words. And then I even started discussing things about the Ahara, Vihara, Dinacharya, Panchakarma, or Rasayana. All of these I would try to explain them in plain English without using Sanskrit words. And it took me some effort. There were many challenges because not all Sanskrit words can be replaced by English words. But if you remove that barrier of language, and if you talk the language that the patient can understand or that the student can understand,
we are then able to get their compliance, because the purpose of either treating or the purpose of teaching is for the other person to use what they have learned from you in practice, whether the students using it in practice or whether the patients using it in practice. And that becomes easy when the doctor or when the teacher becomes sensitive to what the other person can understand. So putting ourselves in their shoes is very, very important. And I thought learning naturopathic medicine helped me in speaking in their language. And how many of you have heard about MD doctor called Deepak Chopra? How many of you have heard about Deepak Chopra? So Deepak Chopra was another person who was able to present Ayurveda in a language that could be understood by his readers. And Rashmi ji, that is the main challenge, is to be able to grasp the attention and understanding of whether the student or the patient. थैंक यू सो मच। और जब बात ट्रांसलेशन की आती है, अपनी बात कहने की आती है, तो खंडेल सर आपसे बेहतर कौन बता सकता है? आपको तो चरक संहिता को लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने का अनुभव भी है और चैलेंज भी। Thank you, Dr. Rasmi ji. Basically, here I am very much little difference with the Vivek Sandbag sir. We have completed the translation of international edition of Charak Samhita in 2015. And 2015 तक केवल इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हम सब लोगों ने ट्रांसलेट करके जब इसको लॉन्च कर दिया, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी। कारण क्या है? ये सही है कि संस्कृत जो है वो फुल्ली ट्रांसलेटेबल लैंग्वेज ही नहीं है। उसको आप फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रांसलेशन करें, और फिर एक वर्ड की ट्रांसलेशन एक वर्ड नहीं हो सकती, कुछ पेजेस हो सकते हैं। तो फिर हमने सेकंड लेवल पर काम शुरू किया कि उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनको सिंगल या कुछ लाइन से उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो हमने उसकी कुछ मोनोग्राफ्स बनाए और मोनोग्राफ्स को हाइपर लिंक किया कि एक ही संस्कृत वर्ड के चरक संहिता में कई जगह पर अलग अलग उसके अंडरस्टैंडिंग है और अलग अलग जगह उसके अलग अलग मीनिंग है और मीनिंग बिहाइंड द मीनिंग्स हैं। इसलिए संस्कृत में ये प्रॉब्लम है, ये बात सही है। लेकिन मैं आपको एक निवेदन करता हूँ कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि आयुर्वेद की जो आउटर लाइन है, जो उसकी कवरिंग है, उससे लोग बाग इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं, वर्ल्ड में एक आयुर्वेद की एक क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है। अभी तक हम आयुर्वेद के जो क्वांटम मैकेनिज्म है वहाँ तक किसी को अंडरस्टैंड करवा नहीं पा रहे जी। वर्ड जो ह्यूमन वर्ड का जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उसको नहीं अंडरस्टैंड करवा पा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे उस मैकेनिज्म तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल सा काम है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आयुर्वेद का जो मैग्नीट्यूड है वो उसकी लैंग्वेज की फुल अंडरस्टैंडिंग के बाद ही समझा जा सकता है। और हमने देखा है कि इसको फुल्ली किसी मॉडर्न सिम्टम में ट्रांसलेट करके अगर हम आयुर्वेद को पढ़ते हैं तो वो डायग्नोसिस वहीं गलत हो जाता है और हम आयुर्वेद के वर्ड को ही एग्जैक्टली शास्त्र से एक बार फिर डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ में देख करके करते हैं तो वो उसका फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ में बहुत आसान इलाज हो जाता है जी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी अब जब हमने 2015 के बाद में 2017 में फिर हमने 500 मोनोग्राफ्स एक एक वर्ड पर लिख दिए और उसको हाइपर लिंक कर दिया, तो अब आप 178,000
उसके कंसल्टेशन हर महीने आते हैं, गूगल एनालिटिका पर आप देख लीजिए, क्योंकि अब लोग उसको समझने लग गए हैं। और उसमें 84 कंट्रीज 86 कंट्रीज से उसके जो है व्यूअर्स हैं, रीडर्स हैं। तो अभी और भी बहुत सारे ऐसे मोनोग्राफ्स हैं जो अभी लिखे जा रहे हैं, लिखने हैं, अभी हमने काम दे रखा है। और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स और बहुत सारे सीनियर रिसर्चर्स उस पर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये अनएंडिंग वर्क है और इसको बहुत बरस लग जाएंगे, शायद मेरे जन्म में तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक लाइन आ गई है। और उसके कारण से अगर कुछ पेजेज में भी संस्कृत को समझना पड़े तो ये महंगा नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सही बात कही आपने थैंक यू। कि जो बात संस्कृत में है वो और किसी में कहाँ। जब एक शब्द का अनेक मतलब हो सकता है तो हम उसे एक शब्द में बांधने की गलती कैसे करेंगे। और ये हमें पूरा विश्वास है कि जो ये अलख आपने जगाई है, जो काम आपने जो बीड़ा उठाया है, हमारे जो कहना चाहिए एस्पायरिंग आयुर्वेदाचार्य हैं वो ज़रूर से इस काम को आगे ले जाएंगे और पूरे विश्व को इस धरोहर से परिचित कराएंगे। आपका बहुत बहुत आभार। और अभी एक प्रश्न आया कि एआई में आयुर्वेदा जो डॉक्टर्स हैं उनका क्या रोल हो सकता है। वैसे तो आपने उसके बारे में कुछ जानकारी दी थी, तो उसमें फिर से कुछ बताइए। You can ask ChatGPT. It will tell you some indications. Just adding to that, so I was just talking to Libel team in the morning. Lot of the Ayurveda drugs that we have, right, they're not just for a single disease. In fact, the same drug is given for multiple diseases. Multiple diseases. That means these are conjecture hypothesis. I'm sure once people generate data, it will become clear. Our hypothesis is that unlike modern medicine, which acts on a single pathway, because you only have one bioactive, Ayurveda drugs by nature have multiple bioactives, so they must be acting in multiple pathways in your body. So since they act in multiple pathways in your body, single drug can have multiple therapeutic uses. So this is where AI can play a role. I already talked about how AI can help in the diagnosis. But if you understand these multiple pathways and also leverage the data, a couple of slides have shown in terms of how AI can help in drug discovery, drug repurposing, we will have much solid understanding of what drug can be used for what disease and what drug can be repurposed for what new diseases that we may not have seen. Okay. तो मुझे लगता है कि आपको चैट जीपीटी पे भी थोड़ा देखना होगा कि क्या क्या स्कोप है। और साथ ही अभी डॉक्टर बाला ने तो बता ही दिया है, ये वैसे भी अपकमिंग कहना चाहिए ब्रांच है और हर चीज़ जो नई होती है वो लोगों को आकर्षित करती है और उसमें काफ़ी स्कोप भी होता है। तो थोड़ी तो आपको भी सर्फिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी आपको भी अपनी दिमाग पे जोर डालना होगा और ढूंढना होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या चैलेंजेस देखते हैं। एआई में ऐसा ही होता है। तो फर्स्ट आई वुड वांट टू जस्ट ऐड अ कपल ऑफ पॉइंट्स टू डॉक्टर बाला जी। कि क्या होता है कि तो जैसे जो है इन आयुर्वेदा जो है इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। इट इज नॉट डिजीज टू मेडिसिन। हम कोई भी एक पेशेंट आता है, वी हैव टू लुक एट वेरियस पैरामीटर्स कि क्या दोष है, क्या धातु है, क्या अवस्था है। तो एक ही डिजीज में अगर कोई पेशेंट आता है एसिड पेप्टिक डिजीज के साथ, ही कैन हैव, उसको आडभान हो सकता है, गुल्म हो सकता है, अम्लपित्त हो सकता है, और उसके भी बहुत प्रकार होते हैं। तो टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन गिविंग द राइट रिकमेंडेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर if we have to drive from Jaipur to Delhi, we know the road, but we still use a Google Maps to help us. So technology can help, in addition to what Dr. Bala said, one, help to recommend the engine. We can have a recommendation engine, जो उसके साथ क्या हो सकता है कि जो वैद्य है उनको और प्रिसाइज जो है दवा मिले। अभी क्या है कि the challenge is here
इज़ दैट अगर हम 5 आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे एक ही बीमारी के साथ, हमें 5 अलग प्रिस्क्रिप्शन मिलेंगे. इट इज़ नॉट दैट वन डॉक्टर इज़ राइट, वन डॉक्टर इज़ रॉन्ग, बट एवरी वन हैज़ देयर ओन अंडरस्टैंडिंग. और अगर हम नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाते हैं, इफ़ यू लुक एट NIA और इफ़ यू लुक एट केरला, दे विल बी completely different prescriptions. So there are the science. The plus point is we have a lot of knowledge, but the knowledge is not got together. So if we can use, which we are doing in Libel, we are collecting information from various expert doctors all over India. और ये combined expert knowledge के साथ हम हर disease का अवस्था और अवस्था के हिसाब से we will be giving the recommendation so as to improve the quality. Because there are some institutes like NIA which have excellent students, but India में ऐसे काफ़ी doctors हैं जिनको additional help की ज़रूरत होगी. So the challenges in addition to this, what we see is that a lot of misconceptions are there. हमारे पास यहाँ पे we have done a lot of research in most of the colleges, but the research papers are not being published. The problem here is with the language. Our research papers are excellent but are not yet published in peer international review journals in the US or in any other country because we are speaking different languages. Or agar, if we can incorporate the standard parameters for assessment, it will help us get accredited and it can help us to publish our papers in journals which are accepted internationally. ओके सो हमने ये जाना कि चैलेंज तो बहुत बड़ा है. सबसे पहली बात कि आप सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं, कुछ अपना भी इंटेलिजेंस आपको लगाना ज़रूरी है. हाँ, आपके इंटेलिजेंस के साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर के आपको एक ऊंचे मुकाम पे ले जा सकता है. सो ये आपका डिस्क्रिशन है, आपकी विवेक बुद्धि है, आप उसको किस तरह से प्रयोग में लाते हैं. पर हाँ, इससे हमारा जो कहना चाहिए स्पेक्ट्रम ऑफ अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी वाइड हो गया है. और न सिर्फ हमारी अप्रोच सिर्फ एक जगह के प्रोफेसर डॉक्टर से है नहीं है, बल्कि बढ़ गए दूसरी जगह के भी जो कहना चाहिए डिग्निटरीज हैं, जो लर्नेड हैं, जो विदुषी हैं, जो विद्वान हैं, उनके साथ में भी हो गए. डॉक्टर देशमुख, आपने तो फॉरेन में भी काम किया है और फिर वहाँ से लेकर के एक्सपीरियंस लेके आप मुंबई में अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या डिफ़िकल्टीज़ आई आपकी वहाँ से इधर आने में? लोकल कहना चाहिए जो मुंबई कर्स हैं उनके साथ में अपना बैठाने में फिर से. Doctor, I would like to add before answering this question towards both the doctors what they talked about कि Ayurveda में how can AI help? In Ayurvedic texts we have always seen कि हमारे आचार्य ने कहा है कि आप्त का सुनो. तो आप्त क्या बोलते हैं वो हम थ्रू संहितास पढ़ते हैं, गुरुजी के पास जाके शिक्षा लेते हैं, थ्रू कॉलेजेस इंटर्नशिप करते हैं. बट इफ़ वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटा बीन कलेक्टेड बिकॉज ऑफ AI, इट कैन ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि बाकी के डॉक्टर्स या फिर बाकी हमारे जो सीनियर्स हैं या कलीग्स हैं उनका अप्रोच क्या है टूवर्ड्स अगर फॉर एग्जांपल लाइक डॉक्टर अभिषेक सेड कि गैस्ट्रोएंटराइटिस है तो उसमें कौन से ड्रग्स दिए जा रहे हैं जिसका इफ़ेक्ट क्या कहाँ पे ज़्यादा अच्छा हो रहा है. जैसे कि नॉर्थ के अगर पेशेंट जाके साउथ में ट्रीट करे तो उस टाइम के लिए क्योंकि वो रिजॉर्ट में या फिर रिट्रीट में जाके रह रहे या फिर हॉस्पिटल में जाके रह रहे, वहाँ पे उनका आहार विहार सभी संभाला जाएगा. बट आफ्टर दे गेट बैक the impact of their seasons or their land on them is going to definitely again put challenges. तो which again cultural differences होते हैं. So maybe this data will actually help us understand कि skew South India में rice does not put weight on them या फिर it is more favorable to them, but North में wheat है. So there are many differences, but a data collection would actually give us a better idea of how we can unite and treat through Ayurveda better, though we have a lot of diversification. मेरी जो वहाँ पे the MD that I did in Panchakarma, it helped me tremendously when I went to the US because I think the higher you educate,
The difficult it becomes to simplify a system and put it in words simply without actually using the modern, any medical lingo for the layman to understand कि आपका actually हो क्या रहा है, मेरे अंदर हो क्या रहा है. That's the usual question that comes. But I was very fortunate to train under Dr. Shanbag, to how to mix both of them and speak the language of the people. Rather, challenges ज़्यादा नहीं हुए. It was much easier for me to come back and implement what I had learned over there. यहाँ पे पंचकर्म हम समझते हैं कि पंचकर्म में 5 कर्म हैं. अभ्यंग, स्वेदन is and added pre panchakarma बोल सकते हैं. But in the US, people understand panchakarma mainly as abhyangam, body massage. And because I took an advanced training of body therapeutic works, I could actually inculcate both, just like myofascial release या फिर different other body therapies which are also done all over the world, and inculcate that in panchakarma therapies back here in India, which became a niche. That's why, it is added to the practice that I do here than more than, face challenges. आप कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर शानबाग? So जो डॉक्टर बाला ने और अभिषेक लल्ला और डॉक्टर देविका ने बोला, डेटा का इम्पोर्टेंस बहुत है. So there is so much of useful information generated in India itself at so many postgraduate training centers. So many MD theses, so many PhD theses are published. But those theses, that data has not been collated or has not been easily available at fingertips. And AI can help with that. Now let's, for example, Dr. Bala, you mentioned about your gastritis, okay, or amla pitta, or whatever the diagnosis was. In many universities here in this country, there have been MD and PhD theses done on that alone, and many bright Ayurveda students and researchers have created various types of questionnaires or various types of assessment systems and various types of what we call as algorithms and how to select various formulas. But that is not available in one place very much like the way how it is available in ChatGPT and Google. But the work that you are doing and the work that Dr. Abhishek Lalla's team are doing at LYBL, that will make it available for every student here to see, okay, what are some assessment techniques or assessment questionnaires available in AI. So the AI will help disciplining every Ayurvedic student and Ayurvedic doctor and make data available easily at fingertips. That's one thing. And then, like Dr. Devika was saying, there are therapeutics available in South, there are therapeutics available in East, in West and North. All of that information will be also available because it is impossible for one student to go to Banaras and study everything from Banaras, then go to Trivandrum and study everything from Trivandrum, then come to Jaipur and study everything in Jaipur, and then try to integrate. That we will need many lifetimes for that. But AI will make that available and help us in becoming more effective Ayurvedic students, more effective Ayurvedic doctors and healers. थैंक यू. एक प्रश्न जो आ रहा है कि आपने कहा चैट जीपीटी से ले लें तो उसमें तो वो बता भी सकते हैं कि आपकी ये प्रकृति हो रही है, ये दोष हो रहा है, ये दवा ले लीजिए. तो क्या ये सेल्फ मेडिकेशन को प्रमोट नहीं करेगा? और ऐसा अगर कोई आता है, जैसे आजकल बोलते हैं ना गूगल ज्ञान बहुत हो गया है, लोग भाग आते हैं कि साहब मुझे ये है, आपने ये देखा कि नहीं, आपने ये करा कि नहीं. तो ये जो गूगल ज्ञानी हैं इनको कैसे समझाया जाए और इनसे कैसे डील किया जाए? सर, ये डॉक्टर विवेक शानबाग, for your kind information, it is now very well available in every student's mobile. How many postgraduate and PhD theses are happened in country, and what is the full verbatim of the thesis is available in with every student. You know, you are postgraduate students, they have already. And what research papers are published
they are having all the research paper data also. So now the condition is very much improved, and my friend Baghel, Professor Baghel, was first written how many theses are with title. Now every word of the thesis is available with every student. Then next is very good point, कि we should not make this as a Google Gyan, available at the Google level. This is a science, medical science, and very important science. This is very important to seek this benefit with the learned and licensed physician only. So, this is the basic knowledge how to keep yourself healthy. Prevention of the disease. This is the right of every person. We are disseminating this knowledge only to keep them healthy. But at the time of the disease, they have to consult their own specialized physician, and only for the diseases. But health is the right of every person. So we are promoting only health tips. And Ayurveda is contributing very good line and length, and our subject of Swasthavritta hygiene is getting knowledge to every Indian people or world, global people. Thank you. Thank you. Dr. Bala. So let me add a couple of things on ChatGPT. Don't know how many of you actually known how ChatGPT is trained. In fact, when they made the first GPT, it was all giving gibberish, because it just looks at the knowledge, it doesn't have the context. And it even now, if you look at the GPT 3.5, if you look at 4, it's a little bit better. But if you look at 3.5, it gives a lot of wrong information. That's what we call in AI terms hallucination. It doesn't know the full context. So the way they improved the algorithm is something called RLHF, reinforcement learning with human feedback. If human feedback was not there in ChatGPT, you will not see the accuracy even now. So it's not that algorithms are trained just by machines. They're actually given the shape and the form by humans, and they've spent millions of dollars having humans tag whether the response is correct or not. So going forward, what is needed is we need to have authentic knowledge based on Ayurveda, and use that authentic knowledge to train these algorithms and have the Ayurveda doctor in the loop. That is the only way you can give personalized and accurate information to the patients. थैंक यू. ऑडियंस के हमारे पास में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, और ये देख के लग रहा है कि अभी इस समय में सब पूरी तरह से जागृत हैं. और ये एक तरह से हमारे लिए भी कहना चाहिए कि हमारा प्लस पॉइंट है कि हमने आपको सुलाया नहीं, हमने इतना बोरिंग नहीं बनाया कि आप सब सुप्तावस्था में चले जाएं. खैर, इससे एक बात जो याद आई वो ये कि एक प्रश्न जो आ रहा था कि भाई गूगल डॉक्टर से क्या करना है. तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि जो हाथ माँ के रोटी के स्वाद में है वो रोटी मेकर की रोटी में नहीं आता. और वही बात है जो आपके टच में है, जब कहना चाहिए ह्यूमन टच टू द पेशेंट, वो बहुत सारी बात कह जाता है, वो बहुत सारा कॉन्फिडेंस और जो जनरेट होता है वो अलग ही बात होती है. तो वो उसकी बराबरी एआई अभी नहीं कर पाया है. शायद कभी एक समय आएगा कि जब रसगुल्ले का स्वाद और खुशबू हमें दोनों ही उस रसगुल्ले की फ़ोटो देख के मिल जाएगी. तो एक ये डॉक्टर बाला आपके लिए एक ने सजेस्ट किया है कि जिस तरह से एआई ChatGPT आया है, तो क्या भविष्य में आप देखते हैं कि ऐसे क्रैडल भी आ जाएं जिस पे बेबी को लिटाएं और उसकी प्रकृति पता चल जाए? Already there are people working on using, but we have to understand this is where a lot of people try to generalize too much. So I know people who say that just by taking picture I can tell your Prakriti, right? So you can tell anatomical Prakriti, but Prakriti is your wholesome features. You have
physiological, you have psychological, right? There are so many other parameters. So you can determine certain things, but not everything, because health is not just, facial features or heart rate, right? It's much more deeper. So sometimes, in the spirit of AI, we give over importance to AI. Right? I think that's something that we need to be careful. But there are people working on algorithms which can extract features to tell certain features which are important. We're also working on certain of those algorithms, but it is not the complete picture. बिल्कुल बिल्कुल सही है. आजकल ना सबको अपने फिंगर से काम करने की बहुत आदत हो गई है, और वो भी शॉर्ट में टाइप करना. LOL, HBD, हैप्पी बर्थडे, JSK, जय श्री कृष्णा, JMD, जय माता दी. अब ये जो जब आएंगे इस तरह से, जब शॉर्टकट में चलते हैं क्योंकि लिखना नहीं चाहते हैं, एक तरह से वो कला लिखने की हम भूलते जा रहे हैं. और जब रूबरू आप कोई चीज़ सीखते हैं, समझते हैं, जिसे हम कहते हैं फिजिकल लर्निंग, तो वो उसका लाभ आपके गुरु के बोलने में, उसके समझाने में, उसकी बात करने में, कई बहुत सी बातें, जैसे बोलते हैं ना, बिटवीन द डॉट्स देयर इज मच मोर विच इज सेड एंड अनसेड. सो इट इज़ देयर. और ये एक बहुत ही बेहतरीन कहना चाहिए हमारे लिए ये सेशन चल रहा है. अगर कोई और कुछ, क्योंकि कुछ एक प्रश्न डुप्लीकेशन था. हाँ जी हाँ, क्या कोई उन्हें माइक दे सकता है? कृपया अपने को इंट्रोड्यूस करें और फिर अपना प्रश्न पूछें. गुड इवनिंग, डॉक्टर ओम फ्रॉम द्रव्यगुण डिपार्टमेंट, MD फर्स्ट ईयर स्कॉलर इन सर्विस. माय क्वेश्चन टू डॉक्टर बाला, जैसा अभी एक क्वेश्चन पहले आया था कि AI की वजह से इन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि जो क्वैक्स है और मिस प्रैक्टिसेस है आयुर्वेद की, जिसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी. जैसे कि एक सिंगर है, ओरिजिनल मेलोडी सिंगर है, कई सालों की तपस्या के बाद में वो एक गाना बना रहा है, और उसके बाद में जिसका सिंगिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो उस गाने को यूज कर रहा है, उससे ज़्यादा अर्निंग भी कर रहा है और पॉपुलैरिटी ले रहा है. तो ऐसी प्रॉब्लम क्या AI के अंदर आएगी, और आएगी तो उसका क्या सॉल्यूशन रहेगा? सेकंड क्वेश्चन डॉक्टर विवेक जी से है कि सर, एज यू हैव स्पोकन दैट कि एक अम्ब्रेला की तरह आयुर्वेद के अंडर बाकी चीज़ों को हम कर रहे हैं. सर, ये तो फूल के जैसे पेटल्स हैं. ऑलरेडी नेचुरोपैथ, योगा, मेडिटेशन, they are not fragmented or separated from Ayurveda. तो rather than इंटीग्रिटी की हम बात कर रहे हैं, इंटीग्रिटी में अगर मिक्सोपैथी कुछ हुआ तो उसका तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इंटीग्रिटी अगर पैरेलल चले तो ऐसा कोई मैसेज हम ईस्ट के अंदर दे सकते हैं कि आयुर्वेदा को हम नेचुरोपैथ और योगा के साथ क्या इंटीग्रेट करेंगे, वो तो खुद इसका पार्ट है. तो हमें इसी अम्ब्रेला के नीचे की बजाय इनको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये तो इसका पार्ट है. ये मैसेज अगर आगे जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा सर. थैंक यू. AI is dumb. So let me repeat it, what it means. Artificial intelligence is dumb. It actually doesn't know what you're doing. There's a human that tells artificial intelligence whether what it is doing is correct or not. I'll give you a simple example. During COVID time, our colleagues in CSIR built an algorithm to diagnose COVID patients from non-COVID patients just by X-rays. 100% accuracy they're getting. So everyone was like, great, you don't need radiologist. AI is able to tell everything. So when they actually went back and looked at it, non-COVID people reports are done in some other center, and COVID people's reports are done in some other center. In the top, there is actually a text where which center is actually the COVID report is done. All the AI system was doing is looking at the top text and determining whether you have COVID or not. So, solution is you need to have something called explainable AI. So it's not sufficient for an AI to make a decision. It should actually reason out why it made a particular decision, and that's something that modern diagnosis people are working. That is something that needs to be done in Ayurveda also. For example, if you say that a particular person has a disease, it should be able to reason out because of this symptoms, because of
changed in Agni, change in, all the parameters. That is how I'm diagnosing that you have this particular disease. So a lot of times, unfortunately, the whole ChatGPT models, the computer vision models, a lot of times they cannot explain things. If you cannot explain, you cannot trust it. So that's why you have to work on something called explainable trusted AI. That's number one. And number two, the AI is as good as the data that you provide, right? So if you don't provide AI the right data, it will give, wrong values. बिल्कुल बिल्कुल सही कि आप कंप्यूटर में जो फीड करोगे वही आप रिट्रीव कर सकते हो, अपने मन से कुछ नहीं, क्योंकि जितना इन्फॉर्मेशन उसमें आप डालते हो वही आता है. तो हमारे पास में अभी प्रश्न बहुत हैं और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, इंटरैक्टिव सेशन चल रहा था. कैन वी आस्क द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड ड्यूरिंग द टी टाइम इफ इट इज़. अगर हो सके तो मैं उनका सेकंड क्वेश्चन आंसर कर दूं. हाँ जी, हाँ बिल्कुल कर दीजिए. तो पहले आपको धन्यवाद क्वेश्चन पूछने के लिए. थैंक यू. यू आर द फर्स्ट वन हु इंटरैक्टेड बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू लॉट मोर इंटरैक्शन. तो इसमें दो बात हो सकती है कि हम सभी ने जो बोला वो सब आपको समझ आ गया और कोई क्वेश्चन नहीं है, या आपको सभी भी डिसएग्रीमेंट है इसलिए आप क्वेश्चन पूछना ही बंद कर रहे हैं. लेकिन आपने वो मेरा डाउट निकाल दिया. थैंक यू. तो आपने जो क्वेश्चन पूछा कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेट करने की क्या ज़रूरत है जब इट इज़ ऑल लाइक सिंगल पेटल. तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. तो व्हेन आई लर्नड नेचुरोपैथिक मेडिसिन इन यूएस, I learnt about many local herbal medicines or botanical medicines that have not been mentioned in all of our Ayurvedic texts. Now, I can make my Ayurveda stronger, my Ayurvedic learning, my Ayurvedic practice, my ability to help my patients stronger by studying these all of the local botanical medicines and understanding them on the basis of Ayurvedic principles of Rasa, Virya, Vipaka, all of that, and then using the locally available herbs. So now I have expanded my Ayurveda by incorporating the local herbs of naturopathic medicine under me. Same thing with acupuncture. In acupuncture, in Ayurveda, there is already some concepts of acupuncture or acupressure under Marma Chikitsa. But Ayurveda, it has gone to the level of 108 or maybe even more marmas. But in acupuncture, the details of the marmas is even bigger. So now my Marma Chikitsa of Ayurveda becomes even stronger because I have learned more from others. So we should never stop learning. And we should always say is that when I'm learning something new, it doesn't mean that I have to disrespect what I have learned earlier. हम जब घर में हमारे माँ से सीखते हैं तो हमने ऐसा नहीं कहना चाहिए कि माँ से जो सीखा है उतना ही काफ़ी है, बाकी किसी से नहीं सीखना है. मैं तो मौसी से भी सीखूंगा, मैं तो अपनी टीचर से सीखूंगा, मैं तो पड़ोसी की जो चाची है उनसे सीखूंगा. और इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने माँ ने जो सिखाया वो भूल जाऊँ. मैं माँ ने जो सिखाया है वो उस ज्ञान को मैं और भी बढ़ाऊँगा. मौसी से सीख के, टीचर से सीख के, मेरी चाची से सीख के, सबसे सीख के मैं और भी उस ज्ञान को बढ़ाऊँगा. That's what I mean by integration. Very well said. एक्चुअली इसमें ये बात आती है कि जहाँ पे आयुर्वेद को भी समझने को लोग तैयार नहीं हैं, आयुर्वेद के नाम से बिदक जाते हैं, वहाँ पे उनको सरल भाषा में ये समझाया गया कि ये इसका एक पार्ट है, जबकि वो मुख्य रूप से है. और बोलते हैं ना, समझ में समझे. तो मैं ये पूछता हूँ, ना समझे वो ना समझे. तो मुझे ये पूछना है, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद को महान बढ़ाना है, या मेरे आयुर्वेद ईगो को महान बढ़ाना है, या किसी को दुख को कम करना है? जब रोगी आता है मेरे पास तो रोगी मुझे ये नहीं बोलता है कि मुझे ये सिम्टम्स हैं, मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, आप मुझे सिर्फ आयुर्वेद से अच्छा करो, मुझे अगर बाकी किसी से मुझे अगर मेरा दर्द जाए तो मुझे नहीं जाना है, मुझे सिर्फ आयुर्वेद से अच्छा होना.
ये कभी भी रोगी नहीं बोलता है. The suffering person says, take my suffering away without side effects, take my suffering away without having too much of expenses, and take my suffering away without having any dependency on it. The sufferer never cares whether it is with Ayurveda or whether it is with Unani or whether it is Yoga or whether it is some Baba ka Ashirwad. He says, just take my suffering away. And that's what I focus on. आयुर्वेद तो हाँ, उसका तो ये है कि आयुष का वेद है, आयुष का ज्ञान है. वही आंसर करें आपका क्वेश्चन. आपको और कंटिन्यू करना है तो प्लीज. दिस इज अ तद्विद संभाषा एंड आई एंजॉय दिस. द तद्विद संभाषा जो है कि वो हमके ऑडियंस से पार्टिसिपेट होनी चाहिए. I would like to add something to your question. हम जो समझते हैं कि naturopathy and yoga are part of Ayurveda. They are, एक सेकेंड डॉक्टर देविका, जो कोई भी रूबरू पूछना चाहता है, they can have the mic and ask the question. Okay? So be prepared with your question. हाँ, please continue. So हमें ऐसे लगता है the entire naturopathy is in Ayurveda. It is not. वो हमारा वहम है. Otherwise different branch ही develop नहीं होती और योग की भी different branch ही develop नहीं होती. हमें सेकेंड ईयर में सिखाया जाता है, फिर हम स्वस्थ में पढ़ते हैं अबाउट योगा. बट देयर इज सो मच टू योगा. योग ये एक इट्स डिफरेंशिएटेड आउट बिकॉज इट हैज़ सो मच टू ऑफर. एंड वाइल स्टडिंग आयुर्वेद वी कैन ओनली डू justice to some part of it, the most important part of it. Just like in the West, naturopathy is a whole 5.5 years of developed science where principles of Ayurveda are applied in some ways, but it's an entire different system of medicine. That is why taking it under an umbrella of Ayurveda, like Ayurveda being the bigger and having small, we have the knowledge of naturopathy, but not completely. And I think we should be okay with that. We should know that we don't know entire science of naturopathy bolo ya fir yoga bolo. There's so much more to learn. So that's it. कम से कम ये बात सही है आपकी कि आयुर्वेद का जो मैग्नीट्यूड है या जो उसका मैकेनिज्म है उसको डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है.
और उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो कमिटेड हैं आयुर्वेद के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन into the certain conditions of the different countries and their license system, है ना, वहाँ अगर कुछ ढंग से आयुर्वेद भी उस नाम से जा रहा है तो हमें इस चीज़ में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि वो लोग आयुर्वेद के छिलके समझ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है ना, ये आयुर्वेद की कवरिंग जो है ना, वो केवल आयुर्वेद इतना सा समझ रहे हैं, जो आयुर्वेद के छिलके हम बाहर फेंक देते हैं वो, और उससे ही दुनिया अट्रैक्ट है। देखिए आप, अब आयुर्वेद को बड़ा डेप्थ में समझने की ज़रूरत है और आयुर्वेद को अपने मूल रूप में समझने की ज़रूरत है, और तभी हम एक अपनी सुपीरियरिटी और अपनी रियलिटी को दुनिया के सामने रख सकते हैं। बात सही है ये बात, लेकिन दिस इज़ द वेरी ट्रांजिशनल टाइम व्हेन वी आर एक्सपेंडिंग द हॉराइजन्स, है ना। अब हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमें क्या है कि कहीं लैंग्वेज की प्रॉब्लम, कहीं इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम ये आती है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी देखेंगे ये इंटीग्रेशन की, लैंग्वेज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन अल्टीमेटली वी आर कमिटेड not to dilute our real sense, our ethical आयुर्वेद, है ना, उसको हमें डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। जैसा सर ने कहा अभी कि बेसिक साइंस का इंटीग्रेशन हो सकता है, मॉडर्न मेडिकल साइंस में इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। मॉडर्न मेडिकल साइंस इज वेरी डिफरेंट साइंस एंड वेरी जनरलाइज साइंस, और हमारा बड़ा पर्सनलाइज साइंस है, और इसके कंसेप्ट जो है वो दर्शन किए गए हैं, देखे गए हैं। वो एक थिंकिंग है, ये देखा गया है, चाहे वो योग चक्षु से, चाहे ध्यान चक्षु से, चाहे तपस चक्षु से, और वो केवल चर्म चक्षु से देखा गया है ना। तो चर्म चक्षु से ज़्यादा बड़ी चीज़ें ये तीन हैं, और ये अभी देविका ने कहा ये आप्त लोगों के द्वारा कहा गया है, इसको हम डाइल्यूट करने की हिमाकत नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। जी पूछिए। उनको माइक दें प्लीज। Rigid that they do not allow Ayurvedic medicine in US as well as the mineral preparation. And also he said that to issue Ayurvedic medicines to patients, he said that it's not a prescription you'd be giving, that it was advice you'd be giving, that it is up to the patient to follow that advice or not. That if you give prescription, that if patient has any side effects, they can take you to court and they can put legal cases against you. So my question is, what is the status of that situation right now in the US, and how did you overcome these challenges, especially with respect to Ayurveda, naturopathy, and what advice do you have for us Ayurveda upcoming doctors? Thank you, sir. Thank you for the question. So, like Khandel ji said, and जैसे आपने कहा, Ayurveda has been in this part of the world, हमारी भारत भूमि और हमारे सभी जो neighbor countries है, it has been a part of eternity. यहाँ पे तो कब से युगों से आयुर्वेदा चल रहा है. Now if you talk specifically about USA, Ayurveda has been introduced there only last 4 decades. 40 बरस पहले वहाँ पे आयुर्वेदा का introduction हुआ. योग का तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन कब 80 बरस पहले हुआ. सो इट्स वेरी इन द बिगिनिंग स्टेज देयर. दैट्स वन थिंग. सेकंड थिंग, इन ऑल ऑफ भारत और ऑल ऑफ इंडिया there is one law for medical practice is used for all over India.
In US, there are 50 states, and 50 states are almost like working like 50 countries when it comes to practice of medicine. So what you can practice in California cannot be practiced in Texas. What you can do in Texas cannot be done in Florida. So there are, each state has different, that's why it is called as United States of America. So there are 50 states. So what you learned is accurate, is that because it is newly being introduced, and there anything that you introduce, it goes through a whole process of evaluation, whole process of discussion, whole process of legalizing. So it is in that process currently. So there are 26 states in United States of America out of 50 where naturopathic medicine is licensed. But those 26 states are the biggest ones, and they are the ones where almost 80% of the population of US lives. So 80% of US population can be treated by licensed naturopathic doctors. Now, because naturopathic medicine in many areas is similar to Ayurveda, but very much like Dr. Devika said, naturopathic medicine and Ayurveda are not exactly same. There is always, okay, when you say even in two Judwa Behane, even in two identical twins, not 100% is identical same. There are similarities and there are some uniquenesses, or there are some differences. So, under the that naturopathic medicine license, Khandilji ne bola jaisa, Ayurveda can be integrated. Now, as more and more Ayurvedic doctors are going there, as more and more understanding and learning and training of Ayurveda is happening there, various states out of those 50 states are starting a process of legalizing and licensing Ayurveda. And then companies like LYBL are also assisting that. Associations like what I am working with, National Consortium of Ayurvedic Medicine, are working for that. We did a conference in Orlando where Khandilji aaye the. We had invited various doctors from Banaras Hindu University, from All India Institute of from Medicine in Delhi. So we invited people from all over the world there, and we did a conference where our goal is to keep the purity, is to keep the authenticity, is to keep the ethical part of Ayurveda intact. Nobody is wanting to dilute Ayurveda. But when you are introducing, you have to always introduce something step by step. For example, AI is so much developed in US. Right now, Bala is trying to introduce AI here step by step. So there is always has to be an introduction step. So that's where it is. So did I answer your question, or did I not answer any of your question? About the medicines, right? Yeah. So about the medicines, again, there is a whole FDA process in US where everything has to go through the FDA approval to make a disease claim. If you say that we are using Panchatikta Ghृत Gugula for Amla Pitta, then that has to go through that FDA process to make that claim. So currently, Ayurvedic medicines are being used in Ayurveda, are being used in US as food supplements or dietary supplements, and there is no problem with that. थैंक यू। सेठिया जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी, माइक। उसके दर्द को कम किया जाए। मतलब जो आज चिकित्सा पद्धतियों की हम बात करें, उनका सबका एक ही उद्देश्य है कि दे शुड बी पेशेंट सेंट्रिक। अभी जब हम चर्चा कर रहे थे, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर वगैरह सारी जो पद्धतियां हैं, है तो सबका उद्देश्य पेशेंट को ठीक करना। और यदि हम और आगे चलें तो नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में वो शक्ति भी है कि रोग को आने ही ना दिया जाए। जो बात आप कहना चाह रहे थे, बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, जिसे शायद वो ठीक से नहीं रख पाए, कि हमारी इन पद्धतियों में ये भी है कि बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास नहीं जाना है। आप तंदुरुस्त रहें, अपने जीवनचर्या को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने डाइट को इस तरह से रखें, और यदि आप इन आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथिक पद्धतियों का उपयोग करेंगे
तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो बीमारी से पहले भी आयुर्वेद आता है और बीमारी के बाद भी आयुर्वेद आता है। तो ये चीज़ है। दूसरा ये था कि हम इन वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में न फंसें। हम यदि इस तरह की बौद्धिक परिचर्चा में लग जाएंगे तो हम पेशेंट को कम फोकस कर पाएंगे। हमारा फोकस पेशेंट होना चाहिए, न कि चिकित्सा पद्धति। धन्यवाद। आयुर्वेद को सबसे ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी मिली है वेस्ट में, वो जो आपने कहा कि प्रिवेंशन और हेल्थ एनहांसमेंट, मतलब कि रोग प्रतिकार करना और रोग को आने ही ना देना, ये जो आयुर्वेद की क्षमता है वो तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पहचानी गई है। उसकी वजह से आयुर्वेद का जो एक्सेप्टेंस और पॉपुलैरिटी वो सबसे ज़्यादा है। और ये क्रैक द वेलनेस कोड जो है वो उसी को तो, और लिव योर बेस्ट लाइफस्टाइल, ये जो है वो सभी उसी को तो ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद में जो ये क्षमता है वो और किसी भी साइंस में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल होम्योपैथी में ये क्षमता नहीं है, एलोपैथी में क्षमता नहीं है। आयुर्वेद हैज़ दिस मोस्ट ब्यूटिफुल gift to the mankind of ahara vihara and to prevent the disease coming in the first place. नहीं कर रहे हैं सर, आप पूछें। समझ में आ रहा है, लेकिन रुकिए, जब चर्चा चल रही है तो क्यों बंद कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल करने के लिए आया ना। बिल्कुल सर, प्लीज कंटिन्यू। सुनिए, आप जो बता रहे हैं आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब बीमारी का सब लोग मिलकर के बीमारी को ठीक करना बिल्कुल सही है, लेकिन जब आयुर्वेद के नाम से कर रहे हैं, जैसे योगा के नाम से आज आसन बन गए हैं और वो वहाँ के लोग आकर के यहाँ के ज्ञान देने लग गए, इसी तरह का जब आयुर्वेद वहाँ जाएगा तो वो लोग आकर के यहाँ पे ज्ञान देने लग जाएंगे। असली आयुर्वेद यही है। तो आप लोग है ना, देखिए, जब आयुर्वेद बीमारी की बात करते हैं तो जब बचपन से या मतलब शुरुआत से ही नहीं है, जैसे अगर एक बच्चा पैदा हो गए हैं उस समय से अगर आप जो है ना उनका लाइफस्टाइल सही रहेगा तो नहीं होगा, वो तो स्वास्थ्य रहेगा। लेकिन आयुर्वेद वहीं तक नहीं है। प्रत्यक्षम ही अल्पम, आयुर्वेद में बताया है कि प्रत्यक्ष आपको जो पैदा होने से दिख रहा है लेकिन वहां से नहीं है। तो जो 9 महीने के गर्भ का भी आयुर्वेद डील मतलब बता रहे हैं, और उससे का जो वाइफ एंड का शुक्र होने ऐसे होना चाहिए, वो सब पूरा जो है ना पूरा सिस्टम है। आप केवल एक बीमारी को लेकर के हमें बीमारी को ठीक करने के लिए आयुर्वेद है, तो अगर यही मैसेज आप दे रहे हैं तो फिर जो योगा आसन वाला आयुर्वेद बन जाएगा, तो उससे तो आयुर्वेद का कोई भला होने वाला नहीं है। जब आप सर मैं बोल रहा हूँ सर, अगर जो है ना आयुर्वेद किसी व्यक्ति को या विषय को, वस्तु को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं तो फिर अप्लाई कैसे करोगे आप उसकी? उस दिशा में तो कोई बात नहीं हो रहा है। अब मार्केटिंग करना, दुनिया में बेचना, नो डाउट कोई बात अच्छी बात है, हमें बेचना चाहिए, सबको बताना चाहिए, लेकिन अपने को पूरा खत्म करके लोगों को जो है ना उन्हीं का आप स्टेज वाइज में भी लेके जा रहे। तो अब योगा भी तो गया स्टेज वाइज में, आज आसन क्यों बन के रह गए? चाहे रामदेव बाबा जी आज जो है ना पूरा इतना हो रहा है, जो 20 साल से जो है ना योगा कर रहे हैं, वो असली योगा में वो तो रह गए ऐसा ही है। तो ये चीज़ है ना, हमें इसको ध्यान देना चाहिए। हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, अगर इसको कुछ भी हो रहा है तो जहाँ ऊपर से आते हैं आदेश पर हम लोग इसको ध्यान मतलब मान रहे, चल रहे, बिक रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा ना। बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही है। ये बात सही है कि आयुर्वेद का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य, सभी लोग जानते हैं, हम सब आयुर्वेद वाले ही बैठे हैं, कुछ लोगों को छोड़ के जो आयुर्वेद से शायद संबंधित, सीधे रूप से संबंधित नहीं है, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और उसके बाद आता है डिजीज जो है कि आतुरस्य विकार प्रशमनम, कि बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य उसको रोग को ठीक करना। तो हमारी जो फर्स्ट पावर है आयुर्वेद की, दैट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीजेस, और दूसरी है ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीजेस। तो हम बात कर रहे हैं यूज़ ऑफ एआई। एआई का यूज़ हमें डेफिनेटली करना चाहिए, देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन इन दैट, और खूब करना चाहिए, चाहे वो डिजीज़ की प्रेडिक्शन हो, चाहे प्रिवेंशन हो, या फिर बाद में डायग्नोस्टिक या ट्रीटमेंट हो, उसमें एआई का यूज़ जरूर करें। अगेन आई एम सेइंग, मैंने शुरू में ही कहा था, कीपिंग द principles of Ayurveda intact and not diluting it.
with anything. That is very important. Otherwise, we shall be lost somewhere in this journey. That is very important. We have to, because we have a strength, and that strength is required for the society, for the humanity as a whole. Every science is having their own strength. We have no objection with the integration, even with any science, even with modern medical science also we can integrate well. We can generate evidence. We have to, where we are poor. One thing that the prevention of diseases, this message we are not carrying accurately to the masses. ये message अभी तक भी हम, चाहे हम जितना मर्जी डिस्कस कर लें, डिजीज प्रिवेंशन पे, लाइफस्टाइल को करेक्ट करने के लिए, डाइट एंड डाइटेटिक्स को करेक्ट करने के लिए अभी भी हम, चाहे भारत में हों, भारत के बाहर हों, अभी भी आयुर्वेद का मैसेज हम मासेस तक नहीं ले जा पा रहे हैं. That is required to be addressed, and definitely for that the AI that can be a big tool. Another discussion was going on regarding the misuse of the AI. Definitely that is a challenge, and the world is worried about the misuse of AI, not in terms of health issues or treatment issues, but so many other issues are there. Privacy matter is also there, security issues are there, national securities are involved. So AI, although it is beneficial tool, it can be used very accurately for the purpose of science and humanity. But at the same time, there is a challenge. I said initially also, there are a lot of challenges also with the AI, and we have to be very much aware about, as you are saying, Madam Manisha is saying that Google Baba is now becoming more and more, and then AI is becoming. Now the theses are being written with the help of AI. That is the helm of the affairs, and I don't know what will happen when this AI tool is will be used more frequently than what will happen. How our younger generation, they will utilize or use this tool. But this is very important, that as we are seeing, talking about Ayurveda and AI. So Ayurveda, the basic principles, basic fundamentals, they are required to be kept intact. Another thing which Shanwagji, with due apologies, I want to say, that of course, initially it may be difficult, it was difficult to make the people understand about the Sanskrit terms. But I still strongly believe that whenever and wherever is possible, I have also traveled almost half of the world, and that now people in other countries also, they are curious about Ayurveda, and they want to understand Ayurveda in Ayurvedic language. That is very important. And if I go to some country to deliver a talk there, they use the word Panchkarma, Prakriti, not their translated terms. Of course, whenever there is some confusion, we can use some bracketed text to make them superficially understand. But exact meaning of that term, Panchkarma, we cannot translate as 5 procedures. It is not 5 procedures. Panchkarma is an umbrella term for something special. Similarly, Prakriti, what we talk about, it is not merely the body composition. There are so many other psychosomatic factors which are involved in that. So far as the language is concerned, so far as the principles are concerned, so far as the aim and objective of Ayurveda is concerned, that should remain intact. That should be not distorted at any cost, anywhere. But we are open, we should be open to use the modern technology, and we are using here even perhaps most of you have not seen this institute. What the technology we have established here, various labs we have established here, we are using all modern technologies, and our students, they are also using, they are also very much aware about, and they are also using up to some extent AI. But again, my particular and personal appeal to whole of the audience and dignitaries, that the principles of Ayurveda, those should remain intact without any distortion. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. मैडम, थैंक यू संजीव शर्मा साहब, आपने इस डिस्कशन को एक जीवंत रूप प्रदान किया, और जो भी हमारी कहना चाहिए समझने में भूल हुई हैं या जो कुछ भी कमियां रह गई हैं, उसको आपने सही कर दिया कि बात जब प्राणों की हो,
बात जब प्राणों की हो तो शरीर पे ना टकिए, प्राण तो प्राण है जनाब, उसी तो दुनिया चलती है। तो अब समय हो चला है, वैसे डिस्कशन इतना रोचक था और इसका पूरा श्रेय राममूर्ति साहब को जाता है। मैडम एज अ पेशेंट मैं कुछ पूछ सकता हूँ क्या मैडम? तो आपने वो कर दिखाया जो सब करने में डर रहे थे। खरी बात हमेशा खरी रहती है और दिल को छू जाती है, तो इसी तरह से और उससे ज़्यादा हम आभारी हैं अभी स्टूडेंट्स को। अभी कुछ और भी सफ़र बाकी है, कृपया साथ न छोड़िएगा। आप सफ़र के जो साथी हैं, शुरुआत से हैं, अंत तक साथ निभाइएगा। मैडम एक एज अ पेशेंट मैं आपको कुछ इनपुट्स देना चाहता हूँ। हियर मैडम, हियर, ओके, दिस साइड मैडम। ओके ओके, सॉरी। ओके सर, मैं एक 2 कदम पीछे ले जा करके एज अ कॉमन भारत का जो नागरिक है और एज अ पेशेंट मैं कुछ छोटे से फीडबैक देना चाहता था, या आपने कुछ विचार। 2 तरह के लोग हैं संसार में, एक वेद संस्कृति को मानते हैं, एक नहीं मानते हैं। आयुर्वेद सबके लिए है, लेकिन निश्चित रूप से अगर ये भगवत प्रदत्त विद्या, वहाँ भगवान धन्वंतरि विराजमान है, अगर ये भगवत प्रदत्त विद्या है जिसे ऋषियों ने, भगवान से ही जो एम्पावर्ड ऋषिज थे, भगवान ने जो मूल प्रिंसिपल्स दिए उसके हिसाब से उन्होंने एक्सपैंड किया आयुर्वेद को डायनेमिक रखने के लिए, तो जो वेद संस्कृति को मानते हैं वो लोग ज़्यादा प्रो होंगे आयुर्वेद को एज इट इज़ एक्सेप्ट करने के लिए, जो वर्तमान में नहीं है। मैं जनता के बीच में रहता हूँ, मैं सैकड़ों लोगों को, मतलब लोगों को ये भी नहीं पता है आयुर्वेद का बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कुछ भी नहीं पता है। 8 डिपार्टमेंट से बहुत दूर की बात है। मैं थोड़ा सा सुवर्ण प्राशन से कनेक्टेड हूँ, तो मैं लोगों को बताता हूँ कि गर्भ संस्कार से लेकर और सब कुछ आयुर्वेद में है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। अब इस गैप को फुलफिल करने के लिए 2 स्ट्रैटेजीज हो सकती है। एक तो लोकल लेवल पे प्रचार, जो NIA वगैरह सब कर ही रहे हैं। एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को अट्रैक्ट करना, क्योंकि हम लोग इस्कॉन से कनेक्टेड हैं, तो हमारे आचार्यों की ये थी कि दुनिया जब अमेरिका उसको फॉलो करेगी, कृष्णा कॉन्शियसनेस को, वैदिक कल्चर को, तो हमारे लोग देखा देखी करेंगे। तो दोनों स्ट्रैटेजीज पैरेलली चलनी चाहिए, इंटरनेशनल को भी अट्रैक्ट करना और यहाँ भी करना। अब इसमें सर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि जो नेचुरोपैथ, वो मैं थोड़ा सा इस पॉइंट पे आके बॉयल डाउन कर रहा हूँ, जो भारत में मैंने सिचुएशन देखी है, क्योंकि नाम उसका नेचुरोपैथ है और क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें आयुर्वेद से सिमिलर लगती हैं एज अ लेमैन, जैसे मुझे लगती थी। तो मेरे पिताजी को पार्किंसंस थी और मैं एक नेचुरोपैथ इंस्टीट्यूट में गया था पता लगाने के लिए। तो वहाँ सबसे पहले हमें बताया गया कि दूध को और घी को बंद कर दो। फॉर्चुनेटली मैं थोड़ा पंचगव्य आयुर्वेद से और थोड़ा गौ माता के पंचगव्य से कनेक्टेड था, तो मुझे अच्छी तरह से मालूम था ये वात रोग है। और वात में घी, जो मार्केट घी नहीं, जो देशी गाय का मथनी से प्राप्त किया हुआ आयुर्वेदिक घी है, यशोदा माता वाले माखन से निकाला हुआ, वो इसके लिए वरदान है। और आगे चल करके हमने पाया कि सिर्फ पंचगव्य घृत के नस्य से 2-2 ड्रॉप से उनका जो ईसोफेगस डिस्फंक्शन शुरू हो गया था, वो उससे रिकवर कर गया। तो फॉर्चुनेटली मुझे पता था, इसलिए मैं वहां नहीं फंसा। अगर मुझे नहीं पता होता तो मेरे लिए बड़ा घातक हो सकता, जब तक मैं रियलाइज करता कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथ अलग है। जो भगवत प्रदत्त विद्या है, आई मीन ह्यूमन बॉडी या किसी भी मशीनरी को ट्रबल शूटिंग का दो तरीके हैं। एक तो खोल खोल के रिसर्च करो, एक जिसने उसको बनाया है उसने ट्रबल शूटिंग के प्रिंसिपल्स दे दिए हैं। अगर भगवत प्रदत्त विद्या है तो भगवान ने पहले से बना दिया है, सब कुछ बता दिया, सूक्ष्म शरीर का और जड़ शरीर का। तो मैं तो पर्सनली ये मानता हूँ वेद संस्कृति के फॉलोअर होने के नाते कि भगवान ने जो चिकित्सा पद्धति दी है ऑल कंप्लीट है। हस्त स्पर्श चिकित्सा से लेकर जड़ी बूटियाँ है, भस्म है, वायु है, सब कुछ है उसमें। और मन किस स्थिति में रखना है, सब कुछ जब उसमें कंप्लीटली है, तो आवश्यकता ये है, आज की डेट में एक आवश्यकता है कि आयुर्वेद को थोड़ा सा उसकी आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया जाए। नहीं तो मेरे साथ जो होने वाला था, और मेरे मित्र यहाँ पे आए हैं, उनके साथ वो हुआ है। 3 महीना उनको एक मास्टर साइनसाइटिस के रोग के लिए उनको 3 महीना लंघन करवाया गया, और आज उनकी इतनी भयानक स्थिति हो गई है उस रोग के लिए, वो जो पद्धतियाँ उन्होंने दी तथा कथित जो नेचुरोपैथ है। तो इस सेमिनार के शायद स्कोप से मैं बाहर की बातें कर रहा हूँ, बहुत आवश्यकता है करना। नहीं तो सर ने जैसा कहा कि योग का वास्तव है योग, जीवात्मा का भगवान से योग, लेकिन जो आसन और क्रियाओं के रूप तक सीमित हो गया है। और अब मैं ऋषिकेश में तपोवन नामक स्थान पे गया, वहाँ योग के नाम पे जो चल रहा है उसे देख करके
कोई नवयुवक भी शायद लज्जित हो जाएगा। तो ये sorry sir, can ये- you precisely Yeah, put so your my- question? I mean, this is more of a suggestion rather than a question. So just sticking to sir's, this thing view that the identity of Ayurveda in its true form has to be preserved. Ayurveda को आयुर्वेद के चश्मे से पढ़ा जाना जरूरी है और समझाया जाना जरूरी है नॉर्मल मासेस को, और साथ ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं ज़्यादा नहीं समझता हूँ, लेकिन if it can be used to direct the patients to an Ayurvedic doctor, that will be the success of AI. उसके बाद डॉक्टर उसको जैसे यूज करता है बहुत अच्छी बात है। अगर जैसे मैडम ने कहा, थैंक यू सर, थैंक जी, यू, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही आपने और उसको कंपाइल किया। वी आर हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर ब्रिंगिंग आउट दिस पॉइंट ऑफ व्यू। मैं अब आमंत्रित करती हूँ NIA से एसोसिएट प्रोफेसर सुदीप रथ साहब को कि वे आए और जैसे कि परंपरा रही है अतिथियों का मोमेंटो दे करके आभार व्यक्त करने की, उसको संपन्न कराएं। उसके लिए कुछ क्वेश्चन, अच्छा हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पे NIA में 4 सूत्र सर्टिफिकेट कोर्स के लिए एनरोल्ड हूँ और आज मेरा लास्ट डे है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, या एक सजेशन कह सकते हैं कि बीइंग ए आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी हैं जो एक जनरली हम नहीं सीख सकते या ना किसी बच्चे को हम सिखा सकते हैं। आज के दिन यहाँ भी अपने स्टूडेंट हैं जो नए स्टूडेंट हैं या 2 साल हो गए 3 साल हो गए हैं, तो आयुर्वेदा का एक कॉन्सेप्ट रहा है कि भाई सबसे पहले आहार विहार जो है हमारी और जो दिनचर्या का जो टॉपिक है, मेरे ख्याल में अगर स्कूल लेवल तक अगर वो पहुँचाया जाए तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, लोग कम बीमार पड़ेंगे और सारी सृष्टि का भला हो सकता है इस चीज़ से। सो आपका स्वागत है रथ साहब आगे की कार्रवाई के लिए। जी Thank you, ma'am. So, on behalf of entire NIA, we would like to extend our token of appreciation through a memento to all the dignitaries who graced us today and participated in a very lively discussion. So, thank you very much. So, in that sequence, first I will request our Vice Chancellor sir to present a memento to Khandil sir. हाँ, लास्ट में दूंगा। हाँ, now I will request sir to present a memento to Dr. Shanbag, please. आप नाम बोल देंगे। ये तो हमारा डॉक्टर बाला पेसाला। Yes. Now I request sir to present a memento to Dr. Bala Pesala. हाँ बस। हाँ बस बस। ये आपके सीईओ है क्या है? चेयरमैन नारायण बख्शी CWC का? हाँ। So continuing, I request you to present a memento to Dr. Devika Deshmukh. हाँ. Now Dr. Abhishek Lula, please. From LYBL. He is from LYBL
Thank you, sir, for coming. And Mr. Naren Bakshi. yes, yes. And finally, I would like Mr. Naren Bakshi, who is behind everything of this, on record we want to acknowledge your contribution, sir. So I will request sir to present a memento to Bakshi, sir. Thank you very much, dignitaries, and thank you very much, Vice Chancellor, sir. Now, Rashmi ji, please take it. Now, Bakshi sir, please रुके. As a token of appreciation, हम क्या कहें, जो भी हमें मदद मिली है NIA से और हमारे डिग्निटरी से, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती. एक ये छोटा सा तोहफा एक दिल से दिल को जोड़ने के लिए, हमारी याद आपकी यादों में बसी रखने के लिए. और मैं आमंत्रित कर रही हूँ मैनेजिंग डायरेक्टर्स माय क्रैक द वेलनेस कोड CWC के विंग कमांडर काला साहब को. प्लीज जॉइन हैंड्स विद बख्शी सर टू गिव मोमेंटोस. फर्स्ट टू द ऑनरेबल वाइस चांसलर of NIA, the prestigious institute of not only Rajasthan but India. तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए साहब, ये तो गलत बात है. Now I request him to kindly give the memento of appreciation to Dr. Vivek Shanbag, जो इतनी दूर से आपके लिए आए हैं और इन्होंने अपना पूरा समय दिया. और डॉक्टर श्री कृष्ण खंडेल, उन्होंने, श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, इन्होंने पूरी चरक संहिता ही पूरी दुनिया के सामने उपलब्ध कराई है. एक बहुत ही बड़ा बीड़ा उठाया है. हमारा बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सर. अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर बाला पेसाला को. डॉक्टर काला सर, प्लीज गिव द मोमेंटो ऑफ एप्रिसिएशन. Next, not the least, Dr. Devika Deshmukh. Thank you, ma'am, for being in this panel discussion. और सबसे अंत में जरूर बुलाया है, पर उनको हम कैसे भूल जाएंगे जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का, हमें कहना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया है और अपनी उपस्थिति से इस मंच को गौरवान्वित किया है. LYBL की तरफ से डॉक्टर अभिषेक लल्ला जी और पूरी टीम भी अगर आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा. यश, प्लीज कम. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें. और समय हो चला है, पर आपको उठ के जाने की इजाजत नहीं है. And there is a pause. I would request Kala sir to kindly present a memento to Dr. Rashmi Jain, the host of our program. Hosts don't give the appreciation to themselves. खुद को ही खुद को देना कुछ अच्छा नहीं लगता. समय हो चला है, पर दिल नहीं करता कि विदा लें. और
There's another pause. Okay. The intelligence is confused now. So I request Professor B.C. Sanjeev Sharma sir to present a memento to Dr. Rashmi also from NIA. We do appreciate her anchoring and we all learned a lot from you. Thank you, ma'am. So now the pause is withdrawn. ओके तो समय तो हो चला है पर दिल नहीं करता कि ऐसा हो। एक इच्छा हमेशा बनी रहती है कि जान पहचान का ये दौर जो आज शुरू हुआ है इसी तरह बरकरार रहे और हम आगे भी इस तरह के और कुछ सेमिनार लेके आएँ, कुछ आपकी सुने, कुछ अपनी कहें और बातचीत यूँ चलती रहे। और आप सबको पेशेंट हियरिंग के लिए यहाँ पे अपना समय देने के लिए औपचारिक धन्यवाद हेतु मैं बुलाना चाहूँगी नन अदर देन द विंग कमांडर विद्याकांत काला साहब को कि वे आए। वो एक बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं और न सिर्फ उनकी कहना चाहिए शख्सियत में वो बात है कि मिलिट्री की जो डिसिप्लिन है वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। उनकी क्रिस्पनेस, उनकी हर चीज़, ही इज़ बीन अ हेल्थ हीरो एंड ही इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ सीट माई क्रैक द वेलनेस कोड इंडिया। थैंक यू काला साहब, द स्टेज इज योर्स। So, before Kala sir takes over the stage, let me introduce myself. I am Sharad Kamra. I am director with My Crack the Wellness Code Foundation. Sorry for holding you out. And the very purpose is that you all have been sitting here for so long, since the afternoon. Some might have been too much glued to the discussion, some might have taken some naps, that's absolutely fine. Yeah, but then I have to take this privilege to get everyone to know about My Crack the Wellness Code Foundation. So I won't take much time and even I won't speak. It's just a small video you need to see to get to know us. Irrespective of how much wealth, assets and material possessions we may acquire for comfort in our life, the real wealth lies in our health. We have often heard this saying, but in the hustle and bustle of our lives, we have somewhere forgotten it. It has been noticed of late that the majority of our wellness-related problems are due to the wrong lifestyle. Crack the Wellness Code, or CWC as it is commonly known, has its origin in the health hero story of its founder, Mr. Naren Bakshi, a serial entrepreneur of Indian origin in Silicon Valley. He was able to reverse his lifestyle diseases like diabetes, sleep apnea, and obesity by making lifestyle corrections that were backed by ancient Vedic wisdom and Western scientific research. This led to the establishment of India Chapter in June 2020 with Wing Commander V.K. Kala leading the Indian operations. With full support from India Community Center and CWC Global in Silicon Valley. This received due adulation from the Honorable Chief Minister Mr. Ashok Gehlot and the then Health Minister of Rajasthan Dr. Raghu Sharma. The encouraging feedback led to the formation of the Indus Wellness Co Trust in April 2021 and finally registered as a Section 8 company under the Companies Act by the name My Crack the Wellness Code Foundation in July 2022. CWC has a dedicated full-time team, doctor patrons and volunteers with a total focus on wellness. The initiative has conducted more than 100 webinars on various dimensions of wellness such as physical, mental, emotional and occupational wellness and so on. Also, we are running customized wellness programs for elders, youth, women, corporates and children and so on with experts from around the globe including Stanford and Harvard University. Our Wellness Resource Center to run regular wellness activities such as wellness-based events, knowledge and yoga sessions, support group interactions, access to wellness library, and so on. It is located at a prominent commercial hub at Jaipur.
Various eminent educational institutions, corporates, and other not-for-profit organizations are already associated with us to work together on spreading the wellness message. This foundation firmly believes that we must take care of our body and mind, as this is the place where we have to spend our entire life. Wellness means that to the extent possible, we should follow good habits in our life so that we remain healthy in all aspects and live our life to the fullest. Healthy mind and thoughts reside in a healthy body. And if we want to live a happy life, then we shouldn't ever let it fall sick. The goal of my CWC Foundation is to bring wellness to the lives of 50 lakh people in 5 years. And for this, our mantra is E, educate, I, inspire, E, empower, and I, impact. The Indian chapter of CWC, just like CWC Global, is committed to working on the reversal of lifestyle disorders related to heart, obesity, diabetes, cancer, and mental and behavioral health. Today, India is doing well in various sectors, but when it comes to Global Wellness Index, India ranks fairly low. It is high time that we Indians claim our rightful place in the Health and Wellness Index, and we are sure that we will make an impact there. So, let us all unite in join this cause of a better India, a wellness-oriented India. Okay, so I think a lot of people are in rush and we really need to just give you a vote of thanks, and after that, you're all going to be free. Thank you so much. Thanks, Sharad. Thank you, Sharad, and I'll make it real short. You know, esteemed guests, our speakers out here, students of NI and faculty, thanks a lot for giving your time to us for this, interesting session that we had, a lot of discussion that we had. And a couple of things I'll add. One is we are working on wellness in sense, how do you stop, you don't get sick by yourself. Somebody made a point of, starting with children. As we saw in the video, we are already doing a program, we call it Comprehensive School Health Program, which we are running in 5 schools currently, and we'll expand to at least double the number in the next year. When I talk of data analytics or AI, my experience has been, there was a time we were applying a lot of data analytics to hospitality industry, and we could guarantee them, we could give them a written guarantee that your gross margin will go up by at least 4% by using our analytical software. Now imagine if it can happen in a hotel industry, if same thing is applied to human beings, what kind of impact can we see? So the possibilities are huge. We need not close our minds to the current trends that are taking place in science. The discussion that we had, I thought there are 2 major points that came out of it. One was which Sab, you also made a point, there is a need to adapt to the technology that is coming up. Otherwise, we'll become irrelevant. We may have a lot of core knowledge, but unless we give that core knowledge to people, tell them what our core knowledge is, how do you expand the scope of application of that core knowledge? And second thing is communication. What we are taught in communication basically is, the listener decides the impact of communication. So we have to speak in the language that a listener understands. So that was another point that came up from discussion. So on behalf of, Team I Cracked the Wellness Code Foundation and NIA, I, Wing Commander Vidyakant Kala, thank you all for your participation in this wonderful session. My special thanks. The purpose of the event was to ignite interest and improve general awareness about advances in field of AI and its impact application in integrative patient care system, comprising of Ayurveda, allopathy, naturopathy, and other pathies. I'm sure you all would agree that we did achieve that purpose. The whole session was moderated so well by Dr. Rashmi. I think you deserve a round of applause, Dr. Rashmi. Great job done. We thank our sponsors, LYBL Healthcare Technology India Private Limited, for supporting this initiative. We look forward to your support in future too.
Big thanks to Mr. Yash Prakash, Dr. Abhishek Lula, Mr. Abhishek Maheshwari, and Mr. Saket for taking time out to travel from Bangalore, Chennai, and Delhi for this seminar. They're all part of the LYBL team. A big round of applause for the organizing team of NIA and CWC from NIA, Dr. Narinder Singh, Dr. Srit Vitrat, and support staff who put a lot of hard work to make this event successful. And another thing I would like to say is the kind of support we got from VC, Sanjeev Sharma sir, that was phenomenal. We gave him very short notice to organize this event, and it was interesting to see the hall full. So thank you so much, sir. For CWC, we had Sharad Kamras, Director of Content and Programs, who kind of led the whole team to have this program out here. He was supported by Mr. Jitendra Gautam, who helps with technology and outreach, Mr. Azhar, who provided photo and video support, Dr. Gargi Gopesh and Dr. Ruma Peter, they provided, they were women in the background supporting us. Then we had Umardeen, who gave us admin support. Rastogi Saab, he has been our, kind of elder in the family, manages things, guides and promotes all of us. And then finally, how can I forget, Mr. Naren Bakshi, our founder chairman, who tells us always to think big. एक उनका पैट शब्द होता है कि बड़ा सोचो, and his energy levels keep us invigorated and are infectious. So we at CWC hope that we all will walk out today more enlightened on topics covered and look forward to similar support for all our events in times to come. Thank you so much. Jai Hind. I now request you all to join us for a cup of tea. Thank you. Okay, all the students here, those of you who are interested in any opportunity in research area, LYBL team is here. Dr. Abhishek Lula